IIM K BMS AT, which is the entrance exam for BMS program at IIM Kozhikode, is going to be conducted on 22nd of June 2025. We are coming up with a crash course wherein we will be covering the whole syllabus that is going to be asked in the exam. This crash course is going to have 30 sessions and each session will be delivered to you on this YouTube channel itself daily at 9 pm. After this crash course is done, we will be providing you with the workshops that will definitely help you train for the exam. As of now, we know that the exam is going to have only QA section and VA section. There is no LR section asked in the exam. But the paper pattern of the exam is not known. As soon as we come to know about the paper pattern, we will definitely deliver 3 to 5 mock tests to you guys as well. So make sure that you subscribe to this channel and inform your friends that this course has started and they can benefit from it. And now let us start learning. In this video, we are going to go through the basics of time, speed and distance, followed by some questions. Time, speed and distance will be recorded in 3 separate videos. Time, speed, distance 1, 2 and 3. So time, speed, distance 1. Let us first understand the basic concept. Basic concept matlab kya? The basic formula for time, speed, distance is distance equal to speed into time. This is the basic formula that we have. Now people will write speed is equal to distance upon time or time is equal to distance upon speed. Distance upon speed. So this is the formula that is there. On the basis of this, we will have to work. Abhi kya hai? When distance is directly proportional to speed when time is constant. ठीक है? And that is why we can say d1 upon d2 is equal to s1 upon s2. है ना? Basic variation का concept है. Then distance is directly proportional to time when speed is constant. So d1 upon d2 is equal to t1 upon t2. अभी ये direct variation है, इसके example समझते हैं. Let us say you decide you want to travel for 2 hours. If your speed is 50 kilometers per hour, you will cover 100 kilometers. Simple सी बात है, distance है, speed है ना? If you reduce your speed to 40 kilometers per hour, in 2 hours you will be able to cover 80 kilometers. And if you increase your speed to 60 kilometers per hour, then your distance traveled will also increase to 120 kilometers in 2 hours. तो अगर हम ऑब्जर्व करें तो अगर मेरा स्पीड रिड्यूस हुआ तो डिस्टेंस कवर्ड भी रिड्यूस हुआ. एंड इफ माय speed increases, my distance covered also increases. Here we have direct proportionality. Yes or no? है ना? एक चीज बढ़ती है तो अगली चीज भी बढ़ती है, एक चीज कम होती है तो अगली चीज भी कम हो जाती है. Similarly, if you decide that you want to travel at a constant speed of 40 kilometers per hour, okay, now distance and time. If you travel for 3 hours, you will be able to cover 120 kilometers, है ना? 40 kilometers per hour, and you travel for 3 hours, your distance covered will be 120 kilometers. If you reduce the time, your distance traveled will also reduce. If you increase the time, your distance traveled will also increase. ठीक है ना? So this is direct proportional. Distance is directly proportional to time when speed is constant. When speed is constant. ठीक है? Next, third one is speed is inversely proportional to time when distance is constant. Distance is constant. है ना? This is very important. We will be using it a lot. ठीक है? Inverse proportionality कैसे है? Because this is the scenario. ये सबसे ज्यादा यूज इसलिए होता है because this is the scenario जो हमको डेली लाइफ में प्रैक्टिकली हम यूज करते हैं. हमको जब हम घूमने निकलते हैं तब हमको डिस्टेंस कितना है यही पता रहता है. लेट अस से आप घूमने निकले तो आपको ये नहीं पता कि आपको 2 घंटे घूमना है, या आपको ये नहीं पता कि आपको कितने की स्पीड से घूमना है. बट whenever you start moving from one destination
टू अदर डेस्टिनेशन, आपको डिस्टेंस पता है एंड ये प्रैक्टिकल सिनेरियो में ज्यादा यूजफुल है, तो उसके ऊपर क्वेश्चंस भी ज्यादा है। लेट अस से यू वांट टू ट्रैवल फॉर 200 किलोmeters. Now your speed initially was, let us say, 40. So 40 kilometers per hour, and you have to travel for 200 kilometers. You will need 5 hours to cover the distance. Now, if you increase the speed to 50, your time required will reduce to 4 hours. है ना, 50 के speed से जाओगे, तो you will be able to cover 200 kilometers in 4 hours only. If you reduce the speed to 25, your time required will increase to 8 hours. Yes or no? With the speed of 25, it will take 8 hours to cover the distance of 200 kilometers. Okay. So this is your basic concept. And this is what we are going to use multiple times. Of which this concept, speed is inversely proportional to time, we are going to use it maximum amount of time. Okay. Moving forward to one small concept where sometimes distance is given to you in meters, time is given to you in seconds, and speed is given to you in kilometers per hour. है ना? Now you cannot directly apply this formula, distance equal to speed into time. You cannot directly apply it because the units are not same. So for that, we might have to convert this speed into meters per second. How to do that? So 1 kilometer per hour is nothing but 1000 meters. And 1 kilometer has 1000 meters. 1 hour. So every hour has 60 minutes and each minute has 60 seconds. Each minute has 60 seconds. So ye 0, ye 0, ye 0, ye 0. So 10 by 36 is nothing but 5 by 18 meters per second. 10 by 36 is nothing but 5 by 18 meters per second. ठीक है, तो अगर मेरा क्या आया, 1 किलोमीटर पर आवर इज 5 by 18 meters per second. ये चीज आपको ध्यान में रखनी है. So if a question comes and there you have to convert 72 kilometers per hour to meters per second, what you will do? 72 into 5 by 18 meters per second. This is 18 1, this is 18 4, 20 meters per second. है ना? Sometimes reverse conversion might also be needed. है ना? कभी कभी हमको meters per second में दिया है and you have to convert it into kilometers per hour. तो ऐसा भी करना पड़ सकता है. तो वही है, सिंपल है, 18 ऊपर जाएगा, 5 नीचे जाएगा. So 1 meters per second will be 18 ऊपर, 5 नीचे, kilometers per hour. है ना? kilometers per hour. ठीक है, दिस इज हाउ यू नीड टू डू इट. बेसिक कंसेप्ट है हमारा, अच्छे से हमको अभी इसको अप्लाई करना है. लेट अस स्टार्ट सॉल्विंग द क्वेश्चंस. सो बिफोर लुकिंग एट द सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन, यू जस्ट हैव टू पॉज द वीडियो एंड ट्राई इट योरसेल्फ. ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. A train travels for a total of 16 kilometers. First half of the distance at 35 kilometers per hour and second half of the distance at 45 kilometers per hour. Total distance traveled is how much? है ना? First half of the distance they are saying. So let us say this distance is d and then second half of the distance is also d. First half is traveled at 35 kilometers per hour. Second half is traveled at 45 kilometers per hour. So time required here would be distance upon speed, that is d by 35. Time required here would be t dash, let us say it would be distance upon 45. Now d plus 35 plus d by 45. This time and this time, I am saying t plus 3 dash is equal to 16 hours. And a train travels a total of 16 hours. And so this should be equal to 16 hours. D common, let us say d by 5 we take common. We have 1 by 7 plus 1 by 9 is equal to 16. So this is d by 5. Base में कितना आ जाएगा? 9 plus 7 upon 9 into 7, that is 63 is equal to 16. So distance will be d by 5
is 16 by 63 is equal to 16. So 16 gets cancelled. What is your total distance traveled? It will be 5 into 63. है ना? Which is 63 5 is 315 kilometers. So this distance is 315. This distance will also be 315. So total distance traveled will be 315 plus 315, 630 kilometers. Total distance traveled will be 630 kilometers. Simple सा exam. Okay. Now you try the second question. Pause the video, try the second question, then look at the solution. I'll be directly jumping to second question. Traveling at 5/6 of his usual speed, a man is 10 minutes late. So usual speed is S and usual time required is T. Now traveling at 5/6 of his usual speed, man is 10 minutes late. So 10 minute extra लगता है. What is the usual time he takes to cover the same distance? तो T की वैल्यू पूछिए, usual time. Now to cover the same distance, मतलब distance constant है ऐसा बोल दिया ना इन्होंने, है ना? To cover the same distance, मतलब distance constant है बोल दिया. So speed is inversely proportional to time. So S1 upon S2 is equal to T2 upon T1. So what is your speed 1? S. What is your time 1? T. What is your speed 2? 5 by 6 S. What is your time 2? T plus 10. ठीक है ना? तो ये S कट गया. What we have 6 by 5. ये फ्रैक्शन ऊपर जाएगा तो उल्टा हो जाएगा. 6 by 5 is equal to T plus 10 अपॉन T. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 6T, है ना? 6T is equal to 5T plus 10 is equal to 5T plus 50. तो 5T इधर आया तो T is equal to 50 minutes, है ना? क्योंकि ये 10 minutes थे ना. तो usual time taken will be 50 minutes. Option A. Moving forward to third question. A person saves 6 minutes by increasing his speed by 25%. है ना? What is the time taken to cover the distance at his usual speed? Let us say usual speed is S, usual time is T. Now he increases his speed by 25%. So S plus 25% of S, which is S common 1 plus 25 by 100, है ना? Which is S 1 plus 0.25. That is S into 1.25. है ना? तो if he increases his speed to 1.25 S, he saves 6 minutes. तो T minus 6 हो जाएगा. What is the time taken to cover the distance at his usual speed? To cover the distance मतलब distance फिर से constant है. अगर distance constant है तो speed inversely proportional to time S1 upon S2 is equal to T2 upon T1. तो usual speed कितनी है S, usual time कितना है T का. increased speed कितनी है 1.25 S, increased मतलब फिर वो टाइम रिड्यूस कितना है 6 मिनट से, है ना? यहाँ पे एस एस कटेगा. ठीक है. अभी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो t इज इक्वल टू 1.25 t माइनस 1.25 इंटू 6. ठीक है ना? अभी 1.25 इस तरफ आएगा. सो दैट इज 1.25 इंटू 6 और ये t इस तरफ आएगा. सो दैट इज 0.25 t, है ना? 1.25 t minus t will be 0.25 t. So this is 0.25 ones are, this is 0.25 fives are. Time required will be 5 into 6, 30 minutes. So time taken, usual time taken will be 30 minutes. ठीक है. Moving forward to fourth question. A boy walks from his home to school at 5 kilometers per hour, reaches the school 4 minutes early, है ना? तो यूजुअल स्पीड है लेट अस से s, जिससे यूजुअल टाइम लगता है t. अगर वो 5 मिनट्स पर आवर के स्पीड से जाता है तो ही विल रीच 4 मिनट्स अर्ली. इफ ही वॉक्स फ्रॉम हिज होम टू स्कूल, है ना? यहाँ पे भी होम टू स्कूल है, यहाँ पे भी होम टू स्कूल है, तो डिस्टेंस कांस्टेंट हो जाता है. तो 4 के स्पीड से जाएगा एंड ही विल रीच 2 मिनट्स लेट. तो ही विल रीच 2 मिनट्स लेट. Find the time taken by him to go to school if he walks at
6, तो 6 की स्पीड से जाएगा तो कितना टाइम लगेगा, है ना। यहाँ पे फिर से डिस्टेंस कांस्टेंट है, तो स्पीड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम है, इसलिए S1 अपॉन S2 इज इक्वल टू T2 अपॉन T1। ठीक है ना। तो जब 5 की स्पीड है तब टाइम है T+2, जब 4 की स्पीड, नहीं, जब 5 की स्पीड है तब टाइम है T-4, एंड जब 4 की स्पीड है तब टाइम है T+2। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 5T-20 इज इक्वल टू 4T+8। 4T अभी इधर आएगा तो सिर्फ T बचेगा, 5T-4T, एंड -20 इधर आएगा तो 20+8 28 ऐसा रहेगा, है ना। तो अभी T इज इक्वल टू 28 आया, T-4 विल बी 24, T+2 विल बी 30। अभी ये दोनों को कंपेयर करते हैं, है ना। यहाँ पे भी डिस्टेंस कांस्टेंट है हमारा, सो स्पीड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम रहेगा ही, एंड दैट इज व्हाई T1 S1 अपॉन S2 इज इक्वल टू T2 अपॉन T1, है ना। वी आर स्किपिंग द स्टेप्स, है ना, वही वही चीज रिपीट रिपीट नहीं लिखते। तो जब आप 4 के स्पीड से जाते हो तो तुमको टाइम कितना लगता है, 30 का। तो अगर आप 6 के स्पीड से जाते हो तो कितना टाइम लगेगा, लेट अस से टी डैश। सो दिस इज 6 1 दिस इज 6 5, सो योर टी डैश इज इक्वल टू 4 into 5 20 मिनट्स, है ना, 20 मिनट्स विच इज ऑप्शन। ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड टू क्वेश्चन नंबर 5। A person travels a distance AB of 15.625 meters in 5 seconds. In the last 4 seconds, every second he covers a distance equal to 1/4 of the total distance covered up to the end of the previous second. Find the distance covered in the first second. ठीक है ना। अभी D फर्स्ट सेकेंड में D करेगा, है ना। In the last 4 seconds, he covers a distance equal to 1/4 of the total distance covered up to the end of previous second. तो second इसमें D/4 करेगा, थर्ड इसमें दिस इज 5, ये टोटल कितना हो गया, 5D/4 हो गया यहाँ तक, 5D/4 हो गया, इसका 1/4 करेगा, है ना, इसका 1/4, तो 5/16 ऑफ D करेगा। ठीक है, फिर फोर्थ सेकेंड में यहाँ तक डिस्टेंस कितना हो गया, D+D+4 प्लस 5D/16, तो D कॉमन 1 प्लस 1/4 प्लस 1/16, तो D कॉमन बेस में आ जाएगा 16, 16 प्लस 4 प्लस 1। ठीक है, 16 प्लस 4 प्लस 1 कितना होता है, 20, 21/16, है ना। यहाँ तक डिस्टेंस 21/16 D हो गया है। अभी अभी इसमें 21/16 हो गया है, अभी इसका 1/4, दैट इज 21/16 इंटू 1/4, तो दैट इज 21/64 ऑफ डी आ जाएगा, है ना, 21/64 ऑफ डी आ जाएगा। अभी फिफ्थ सेकेंड में वो कितना काम चलेगा ये देखते हैं। फोर्थ सेकेंड तक 21/16 डी चल दिया था, प्लस 21/64 डी और चलेगा ये वाला, तो 21/16 अगर मैं कॉमन निकाल देता हूँ तो 1 प्लस 1/4 आएगा, विच इज 21/16 इंटू 5/4 डी, तो 21 इंटू 5 इज 105/16 इंटू 4 इज 64 डी, तो ये 105/64 डी आ गया, इसका और 1/4, तो 64 इंटू 4, तो ये 105/256 डी आ गया। टोटल ऑल ऑफ दिस इज इक्वल टू 15.625, 15.625। ठीक है, तो डी निकाल लेते हैं। यू हैव 1 प्लस 1/4 प्लस 15 5/16 प्लस 21/64 प्लस 105/256 इज इक्वल टू 15.625, है ना। इसको सॉल्व करना पड़ेगा, मेहनत वाला काम। तो डी बेस में कितना आ जाएगा, 256, तो इसका 256 आएगा, इसका 4 से मल्टीप्लाई करना है ना, तो 64 आएगा, इसका 16 आएगा,
इसका 4 आएगा एंड इसका, अच्छा नहीं, 16 इंटू 5 भी तो करना पड़ेगा, तो 80 हो जाएगा। 4 इंटू 21 भी करना होगा, तो 84 हो जाएगा, है ना। 64 इंटू 4 तो 21 इंटू 4, तो ये 84 हो जाएगा। एंड ये 105 तो रहेगा, इज इक्वल टू 15.625। ठीक है, सो दिस इज डी कॉमन, बेस में 256, एंड ये एडिशन करना पड़ेगा, 256 प्लस 64, 260, 320, 320, 400, 400 प्लस दिस इज 400 plus 105 is 505, 505 plus 84 is 589, 15.625. Once you solve it, है ना, इसको सॉल्व करने की मेहनत अभी आप करो, इट विल बी 6.4 meters, है ना, इट विल कम आउट एज 6.4 meters. ठीक है, दिस हाउ यू नीड टू डू इट. अगर आप चेक करना चाहते हो तो दिस इज 6.4, उसका 1/4 विल बी 1.6, है ना. टोटल हो गया 8, उसका 1/4 विल बी 2, टोटल हो गया 10, उसका 1/4 विल बी 2.5, टोटल हो गया 12.5, जिसका 1/4 हो गया 3.625. यस, तो ओवरऑल 15.625 ऐसा आ जाएगा. मूविंग फॉरवर्ड टू एवरेज स्पीड. एवरेज स्पीड इज अ वेरी इजी कंसेप्ट. एवरेज स्पीड is nothing but total distance upon total time. Total distance upon total time. ठीक है, रिमेंबर दिस. ये बहुत बार बहुत स्टूडेंट्स गलती करते हैं इन एप्लीकेशन ऑफ एवरेज स्पीड. रिमेंबर दिस, इट इज टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम. ठीक है, फॉर एग्जांपल 6th क्वेश्चन देखते हैं. बाला ट्रेवल्ड फॉर 3 hours एट 40 किलोमीटर पर आवर. ठीक है ना, 3 hours at 40 kilometers per hour, then 5 hours at 60 kilometers per hour, 5 hours at 60 kilometers per hour. Find his average speed. So what is the distance traveled over here? 3 hours at 40 kilometers per hour, so that is 120 kilometers, and 5 hours at 60 kilometers per hour, that is 300 kilometers. So overall 420 kilometers will be traveled, है ना. Total distance traveled will be 420 kilometers. So average speed is total distance, and average speed is what? Total distance upon total time, right? So total distance is 420, total time is this 3 hours and 5 hours, that is 8 hours. तो ये कितना हो गया? 52.5 kilometers per hour, है ना. 52.5 kilometers per hour is the average speed. Moving forward to 7th question. Alok traveled from Hyderabad to Tirupati at 60 kilometers per hour and returned at 90 kilometers per hour. What is his average speed? Now many students will do 60 plus 90 by 2, that is 75, and this is wrong. Okay, so Alok traveled Hyderabad to Tirupati. Hyderabad to Tirupati. Let us say this distance is D. He traveled at a speed of 60 and returned at a speed of 90. What will be the time required here? D by 60, and a distance upon speed. Time required here will be D by 90, distance upon speed. So average speed will be total distance, है ना. While going the distance is D, while coming back also the distance is D. So total distance is 2D upon total time, which is D by 60 plus D by 90, है ना. So that is 2D common, यहाँ पे D common, 1 by 60 plus 1 by 90. So this D will get cancelled. So this is 2. Base में कितना आ जाएगा? 180. 60 and 90 का LCM is 180. Now 63 is a 180. So यहाँ पे ऊपर भी into 3 करना होगा.
एंड 92 जा 180, तो यहाँ पे ऊपर भी 2 कर रहा हूँ. सो दिस इज 2 into, ये फ्रैक्शन ऊपर आएगा तो रिवर्स हो जाएगा, 180 अपॉन 3 plus 2 is 5. So this is 5 1 जा, this is 5, 36 जा. 36 into 2, 72 kilometers per hour is the average speed. 72 kilometers per hour is the average speed, है ना? So don't commit this mistake, है ना? Many students will commit this mistake. ये commit नहीं करना है अपने को. Average speed is total distance upon total time. ठीक है? Moving forward to relative speed. Relative speed is a concept जहाँ पे आपको real life scenario explain करना is bit complicated, but still try to understand. Relative speed in same direction and in opposite direction. ठीक है? Relative speed in same direction and in opposite direction. So relative speed in same direction, let us say two objects are moving in same direction. Their relative speed, है ना? Their relative speed will be S1 minus S2 mod value, है ना? Why? Now understand what I am trying to tell you. Let us say you are moving on a highway in your car at a speed of 80 kilometers per hour. है ना? Understand, listen to what I am saying. If I am moving on a highway at a speed of 80 kilometers per hour, and there is another car which is moving at a speed of 60 kilometers per hour, and it is in front of you. Now, you want to overtake this car with a speed of 80, but this car, है ना, this car is negating it with a speed of 60. So effectively, you are overtaking that car with a speed of 20 only. है ना? Effectively, you are overtaking that car with the speed of 20 kilometers per hour only. है ना? That is your relative speed. Relatively, you are overtaking, or relatively you are going faster by only 20 kilometers per hour. ठीक है? Now, relative speed in opposite direction. So, two cars are moving in opposite direction, S1 and S2. Their relative speed will be S1 plus S2. So you are moving at a speed of 80 kilometers per hour on a highway. There is another car moving at a speed of 60 kilometers per hour. Okay, you both are moving in opposite directions. तो in such cases वो आगे वाली कार फटक से आ जाती है. Why? Because you are moving at a speed of 80 and that car is moving towards you at a speed of 60. So both the cars are helping each other to meet each other. Listen to what I am saying. Both the cars are moving in opposite direction. So both the cars are helping each other to meet each other. Now when they are helping each other, so this is moving at a speed of 80, this is moving at a speed of 60. तो help कर रहे हैं, तो दोनों का relative speed कितना हो जाएगा? S1 plus S2, that is 80 plus 60, that is 140 किलोमीटर पर आवर. मतलब वो एक दूसरे के तरफ 140 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आ रहे हैं. ठीक है ना? अभी इसका एक सिंपल सा एग्जांपल देखते हैं. ठीक है? देयर इज अ डॉग which can run at a speed of 5 meters per second, and there is a cat which is 100 meters away and it can run at a speed of 3 meters per second. They both are moving in same direction and they both start running simultaneously. This word simultaneously is very much important. Okay, this word simultaneously is very much important. ठीक है? So they both are moving in same direction and they both started moving simultaneously in the same direction. है ना? मतलब दोनों एक ही मोमेंट पे भागना स्टार्ट किया. So यहाँ पे जाके कहीं तो भी the dog will be able to catch the cat. है ना? Let us say this distance is x. कुछ distance पे dog will be able to catch the cat. Now distance is equal to speed into time. What is the distance covered by cat? X meters. What is the speed of cat? 3 meters per second. What is the time taken? T. For dog, what is the distance traveled?
100 plus x. What is the speed? 5 meters per second. And time is t only because they both left from here simultaneously and they both reached here simultaneously. है ना? दोनों साथ में निकले and ये point पे साथ में पहुंचे. तो time required तो सेम ही रहेगा. है ना? Now this equation minus this equation. What I'll get? 100 is equal to 5t minus 3t, that is 2t. But मैं इसको ऐसे लिखूंगा, 100 is equal to 5 minus 3 into t. 5 minus 3 into t. Now 5 minus 3 into t is how much? This 5 minus 3 is nothing but the relative speed in same direction. है ना? This 5 minus 3 is nothing but relative speed in the same direction. Same direction में भाग रहे हैं वो, तो उनकी relative speed will be 5 minus 3. This 100 is the extra distance traveled by the faster route. है ना? देखो एक्स्ट्रा डिस्टेंस क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि कैट ने भी एक्स डिस्टेंस भागा है, डॉग ने 100 प्लस एक्स भागा है ना? बट वी आर कंसिडरिंग ओनली 100, नो? सो ट्रेवल्ड बाय फास्टर ऑब्जेक्ट या फास्टर वन. ठीक है, यहाँ पे हमको क्या समझ में आता है? whenever we consider relative speed in same direction, we consider the extra distance traveled by the faster object or faster train or faster car or faster one. ठीक है ना? फिर से बोलता हूँ, whenever we consider relative speed in same direction, we consider the extra distance traveled by the faster one. ठीक है? Next comes opposite direction. Here we have Raj, who is madly in love with Simran, and that is why Raj is moving at a speed of 10 meters per second towards Simran. And Simran is like, I am still thinking whether I should love him or not. So Simran is moving at a speed of 2 meters per second. ठीक है, Simran is moving at a speed of 2 meters per second. है ना? मतलब राज अंधा प्यार करता है, राज को ये लड़की होना मतलब होना ऐसा वाला है ना? तो he is running at a very high speed and Simran is still thinking, do I really love this guy? तो उसके लिए in that thinking phase she is running at a speed of 2 meters per second, but थोड़ा सा पॉजिटिव है, वो उससे भाग नहीं रही, वो उसकी तरफ भाग रही है ना? वो उसके अपोजिट नहीं भाग रही. ठीक है ना? तो this is 240 meters. Let us say their initial distance is 240 meters. This is where Raj and Simran will meet. So they both start running in opposite direction simultaneously. They both start running in opposite direction or they both start running towards each other simultaneously. है ना? अभी ये दोनों simultaneously भाग रहे हैं, यहाँ पे कहीं तो भी पकड़ेंगे. Let us say this distance is x. This will be 240 minus x. Distance is equal to speed into time. सिमरन का क्या है? सिमरन ने x डिस्टेंस कवर किया 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से t टाइम में. राज ने 240 माइनस x डिस्टेंस कवर किया 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से t टाइम में. है ना? दोनों को ऐड कर देंगे तो 240 इज इक्वल टू 12t. 240 इज इक्वल टू 12t. है ना? अब ये 12t क्या है? इट इज नथिंग बट रिलेटिव स्पीड. है ना? ये 240 इज नथिंग बट 10 प्लस 2 इंटू t. What is this? This is relative speed in opposite direction. Relative speed in opposite direction. What is this 240? It is the initial distance between the two objects. Initial distance between two objects. ठीक है? So whenever we consider, ध्यान से सुनो, whenever we consider relative speed in opposite direction, we consider initial distance between the two objects, which is 240 meters. ठीक है?
तो ये दोनों चीजें, ये दोनों स्टेटमेंट्स आपको ध्यान में रखनी है. पहला स्टेटमेंट, whenever we consider relative speed in same direction, we consider the extra distance traveled by the faster one. दूसरा, whenever we consider relative speed in opposite direction, we consider the initial distance between the two objects. ठीक है? Moving forward to the questions. X and Y are 270 kilometers apart. ठीक है. 8th question. X and Y are 270 kilometers apart. At 9 a.m., buses A and B left for X and Y. X and Y for Y and X, है ना? तो A यहाँ से निकली, B यहाँ से निकली. If the speed of A and B is 50 and 40, इसकी speed है 50, इसकी है 40. Find the time, find their meeting time. So distance equal to speed into time. So what is the relative speed? 90, 50 and 40, है ना? Whenever we consider relative speed in opposite direction, we consider the initial distance between them, which is 270. So 91, this is 93, sir. So time is 3 hours. 3 hours is 12 p.m. And 9 a.m. से 3 hours is 12 p.m. Then you have 9th question. A cat, on seeing a dog 100 meters away, turns around and starts running away at 24 kilometers per hour. ठीक है ना? Turns around and 24 के स्पीड से भाग रहा है. The dog spots him 1 minute later and starts chasing the cat at 33, है ना? तो 1 minute में ये कितना भाग लेगी? Distance is equal to speed into time. तो this is 24 into 5/18 करना पड़ेगा ना मेरे को. into 5/18 करना पड़ेगा मेरे को. क्यों? क्योंकि ये किलोमीटर्स पर आवर में है. एंड 1 मिनट मतलब ये 60 सेकेंड्स हो गए. तो 1 मिनट में कैट कितना भाग लेगी? इतना. दिस इज 6 3s, दिस इज 6 4s, दिस इज 3 1s, दिस इज 3 20s. 20 into 20 400. तो कैट यहाँ पे भागेगी, यहाँ पे 400 मीटर्स और यहाँ पे आगे. एंड कैट इज स्टिल रनिंग एट 24. And now at this moment the dog starts running at a speed of 33. Dog starts running at a speed of 33. Now distance is equal to speed into time. What is the relative speed? 33 minus 24, है ना? That is 9. And यहाँ पे जाके cat जो है वो dog, cat and dog meet करेगी. So what is the extra distance traveled by dog? This 500. No? This 500 is the extra distance traveled by dog into time. So time, and this 9 has to be multiplied by 5/18. Yes or no? Because we have to convert it into meters per second. So 9 ones are, this is 9 twos are. So this 500 is equal to 5/2 into t. So this and this is 100. So time required is 200 seconds. Now understand the question. After how much time from the start of the cat's run will the chase end? है ना? तो ये डॉग ने 200 सेकेंड्स भागा है. एंड उसके पहले भी तो कैट 60 सेकेंड्स भागी थी. तो टोटल 260 सेकेंड्स विल बी द आंसर. ओके. डॉग अकेला 200 सेकेंड्स भागा है एंड कैट 60 सेकेंड्स भागी थी. तो टोटल 260 सेकेंड्स हो जाएगी. 10th. A thief was running along to a median on a road at 6 kilometers per hour. अच्छा क्वेश्चन है. मीडियन मतलब डिवाइडर. मीडियन मतलब बीच का पार्ट रहता है. लेट अस से डिवाइडर. He crossed a police jeep moving at 9 kilometers per hour in the opposite direction. ठीक है ना? तो थीफ भाग रहा है यहाँ पे 6 के स्पीड से किलोमीटर्स पर आवर. एंड जो पुलिस है वो इधर भाग रहा है 9 kilometers per hour की स्पीड से in the opposite direction. The jeep had to continue for 10 more minutes before it could find the gap in the median and start chasing the thief. तो 10 मिनट के लिए ये इधर जाएगा एंड पुलिस इधर जाएगी, है ना? तो फॉर 10 मिनट्स दे आर रनिंग इन अपोजिट डायरेक्शन.
ठीक है ना, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो अपोजिट डायरेक्शन में उनकी रिलेटिव स्पीड कितनी है, 15 किलोमीटर पर आवर, है ना, 15 किलोमीटर पर आवर, है ना। अपोजिट डायरेक्शन की रिलेटिव स्पीड 9 + 6 15। एंड टाइम रिक्वायर्ड कितना है, टाइम रिक्वायर्ड है 10 मिनट्स। आई हैव टू कन्वर्ट इट इनटू सेकेंड्स। तो इतने डिस्टेंस के लिए वो सेपरेट होते जाएंगे। तो 15 मतलब दिस इज 15 4 जा 10/4 इज 5/2, दैट इज 2.5 किलोमीटर, दैट इज 2.5 किलोमीटर। इतने वो सेपरेट हो जाएंगे, है ना, 2.5 किलोमीटर। अभी सिचुएशन क्या है, थीफ एंड पुलिस में 2.5 किलोमीटर का डिस्टेंस है। पुलिस इज स्टिल रनिंग एट 9, थीफ इज स्टिल रनिंग एट 6, है ना। ठीक है, अभी अपने को पता करना है, फाइंड द टोटल टाइम टेकन बाय थीफ टू कैच द थीफ फ्रॉम द टाइम इट क्रॉस्ड। तो यहाँ पे अपने को जाके पुलिस जो है वो थीफ को कैच कर लेगा। लेट अस से दिस डिस्टेंस इज x, सो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। व्हाट इज देयर रिलेटिव स्पीड, 3 किलोमीटर पर आवर, है ना। द रिलेटिव स्पीड इज 3 किलोमीटर पर आवर। एंड देयर whenever we consider relative speed in opposite direction, no, relative speed in same direction, we consider the extra distance traveled by the faster one. So extra distance traveled by the faster one is 2.5 kilometers into t. So t is equal to 2.5 by 3, that is 25 by 30, that is 5/6 of an hour. 5/6 of an hour is 50 minutes, no? Yes or no? 5/6 of an hour is nothing but 5/6 into 16 minutes, that is 50 minutes. ठीक है, so find the total time taken by jeep to catch the thief from the time it crossed, है ना। तो टोटल ये 50 मिनट तो ये भी है, एंड क्रॉस किया उसके बाद वो 10 मिनट के लिए से अपोजिट डायरेक्शन में भी भागे, है ना, अपोजिट डायरेक्शन में भी भागे, तो 10 मिनट ये भी है। सो टोटल टाइम इन मिनट्स विल बी 60 मिनट्स। ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड टू 11th क्वेश्चन। A man left X for Y. Another man left Y for X at the same time. ठीक है, सेम टाइम मतलब साइमल्टेनियसली निकले। X ये Y, यहाँ पे पहला इंसान निकला एंड यहाँ से दूसरा इंसान निकला। After reaching their destination, they turned back without stopping. ठीक है, they crossed each other at 30 kilometers from X on their onward trip and 20 kilometers from Y in their return trip, है ना। तो ऑनवर्ड ट्रिप का लेते पहले, तो ऑनवर्ड ट्रिप दे मेट हियर, लेट अस से टोटल डिस्टेंस इज d, they first time they met here 30 kilometers on the onward trip, so this will be d minus 30, and they both are moving in opposite direction. So distance is equal to speed into time. Distance, uh, what is their relative speed, what is their relative speed, speed of 1 plus speed of 2, no, एंड दे मेट 30 किलोमीटर्स। ठीक है, तो एक्स एंड वाई का अलग अलग से ही निकालते हैं, एक्स एंड वाई का हम अलग अलग से ही निकालते हैं, हम टाइम कांस्टेंट है यहाँ। तो एक्स ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 30 किलोमीटर्स ट्रेवल किया, है ना। या फिर फर्स्ट इंसान ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 30 किलोमीटर्स ट्रेवल किया, एंड उसकी स्पीड s1 से टाइम t, एंड सेकेंड इंसान ने ही ट्रेवल्ड d minus 30, उसकी स्पीड है s2 इन टाइम t ओनली, है ना, बिकॉज दे लेफ्ट देयर स्टार्टिंग पॉइंट एट द सेम टाइम, है ना, दे लेफ्ट देयर स्टार्टिंग पॉइंट एट द सेम टाइम। ओके, सो नाउ दैट टाइम इज कांस्टेंट, हम इसको डिवाइड कर देते, 30/d-30 इज इक्वल टू s1/s2। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, उनके रिटर्न ट्रिप में दे अगेन मेट, दिस इज x, दिस इज y, फर्स्ट वाले टोटल डिस्टेंस इज d,
तो फर्स्ट पर्सन जो है वो इधर से जाके इधर आके ऐसा मिला, एंड सेकेंड वाला जो इंसान है वो इधर से जाके इधर ऐसा मिला एट 20 किलोमीटर्स फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, 20 किलोमीटर्स फ्रॉम वाई। ठीक है, तो फर्स्ट इंसान ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, डी प्लस 20, है ना। सेकेंड इंसान ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, दिस डी प्लस डी माइनस 20। तो फर्स्ट इंसान ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, डी प्लस 20। सेकेंड इंसान ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, डी प्लस डी माइनस 20। ठीक है, दे बोथ लेफ्ट साइमल्टेनियसली, ये अपने को पता है, दे लेफ्ट एट द सेम टाइम, एंड आफ्टर रीचिंग देयर डेस्टिनेशन दे टर्न बैक विदाउट स्टॉपिंग, है ना, पहुंचे और घुमा ली गाड़ी। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। पहले इंसान का क्या है, ही ट्रेवल्ड डी प्लस 20 at a speed of at a certain speed s1 in time t, या फिर t डैश। एंड सेकेंड इंसान जो है, he traveled 2d minus 20 distance, है ना, this is 2d minus 20 distance at a certain speed s2 in time t dash। ठीक है, यहाँ पे भी हम अगर डिवाइड करेंगे तो d प्लस 20 अपॉन 2d माइनस 20 इज इक्वल टू s1 प्लस s2, क्योंकि t1 t डैश तो कैंसिल हो जाएगा। Now, both the right hand sides are equal. So we have to equate the left hand sides. So 30 upon d minus 30 is equal to d plus 20 upon 2d minus 20. है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सो दिस विल बी 60d माइनस 30 इंटू 20 कितना है, माइनस 600। ये कितना हो जाएगा, डी स्क्वायर, डी स्क्वायर प्लस 20d प्लस 20d माइनस 30d माइनस 600, है ना। तो माइनस 600 गेट्स कैंसल। सो वी हैव 60d इज इक्वल टू डी स्क्वायर, 20d माइनस 30d इज 10d। सो अच्छा, 60d आ गया ना, ये बराबर है डी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर माइनस 30d प्लस 20d माइनस 600, 600 600 will get cancelled, and this is 2d, तो 60d minus ये भी सही है। So what we have, minus 10d, so this will be 70d is equal to d square, dd cancel हो जाएगा, तो d is equal to 70 किलोमीटर आ जाएगा, है ना। ये d cancel हो जाएगा, तो d will be equal to 70 किलोमीटर। ठीक है ना, so total distance is 70 kilometers, which is xy। ठीक है, moving forward to 12th question। okay, Anwar leaves home every day at 4 p.m. to pick his wife from office and returns home at 6 p.m. ठीक है, तो 4 p.m. को निकलता है एंड 6 p.m. को रिटर्न आता है ना। तो होम से निकला, ऑफिस गया, तो डिस्टेंस तो कांस्टेंट है, तो यहाँ पे 5 p.m. को पहुंचता होगा ना, तो ट्रेवल टाइम इज 1 आवर, ट्रेवल टाइम इज 1 आवर। ठीक है, 4 p.m. को निकला, 1 आवर ट्रेवल किया, 5 p.m. को ऑफिस पहुंचा एंड ही रिटर्न्स होम एट 6 p.m. 1 आवर ट्रेवल कर। वन डे द ऑफिस was over by 4 p.m. है ना। जनरली द ऑफिस गेट्स ओवर एट 5 p.m. क्योंकि वो अपने बीवी को लेट लेने तो नहीं जाएगा, है ना। तो एक सिंपल सी चीज है, उतना तो अपने को रखना पड़ेगा ना यार, या तो गाली अलग से खानी पड़ेगी बीवी को ऑफिस से लेट उठाने गए। ठीक है, तो बीवी का ऑफिस वी आर एक्सपेक्टिंग कि 5 p.m. को ही छूटता हो। ठीक है, सो दिस इज अनवर्स स्पीड एंड ऐसा है। बट देन वन डे, this is home, this is office, one day office was over at 4 p.m. and his wife started walking from home,
वॉकिंग होम फ्रॉम ऑफिस, तो अनवर भी यहाँ पे निकला 4 AM को, 4 PM को अनवर भी निकला यहाँ से, है ना। अनवर अनअवेयर ऑफ दिस स्टार्ट्स फ्रॉम हिज होम यू एज यूजुअल एंड मीट्स हिज वाइफ ऑन द वे। ठीक है, तो अनवर भी 4 PM को निकला एंड उसकी वाइफ भी 4 PM को निकली, है ना, बिकॉज ऑफिस गॉट ओवर एट 4 PM नो। तो अनवर भी निकला 4 PM और उसकी वाइफ भी 4 PM को ही निकली, है ना, उसकी वाइफ भी 4 PM को ही निकली। 15 मिनट्स, हाँ, ठीक है। सो अनवर वॉज अनअवेयर ऑफ दिस सिचुएशन, he started at 4 PM, his wife also started at 4 PM, and Anwar, unaware of this situation, he will meet his wife somewhere in the middle, and he'll reach here by 4. He'll reach here 15 minutes early. That is 5:45 को ही वो पहुंच जाएगा, है ना। That is 5:45 को ही वो पहुंच जाएगा, है ना। तो 5:45, तो 4 PM and 5:45 PM total is 105 minutes, है ना। 4 PM to 5:45 PM total is 105 minutes. For 105 minutes मतलब 52.5 मिनट्स पे वो यहाँ पे होगा जहाँ पे अनवर एंड वाइफ मिलेगी, है ना। 52.5 मिनट्स के बाद वहां पे होगा जहाँ पे अनवर एंड वाइफ मिलेगी, ठीक है। सो सिंपल सा है अभी, ठीक है। इफ द स्पीड ऑफ अनवर्स कार इज 30 किलोमीटर पर आवर, अनवर की कार की स्पीड कितनी है 30, तो अगर अनवर की कार की स्पीड 30 है तो ये डिस्टेंस कितना हो गया 30 इंटू 1, 30 किलोमीटर, ठीक है ना। Now we have to find out his wife की speed. So distance is equal to speed into time. So what would be the relative speed? Anwar की speed plus wife की speed, है ना। Whenever we consider relative speed in opposite direction, we consider the initial distance between them, which was 30. Initial distance between them was 30, and the time for which they moved towards each other was 52.5 minutes. No? 52.5 मिनट्स, इसको मेरे को किलोमीटर्स पर आवर, ये किलोमीटर्स में है तो इसको मुझे आवर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो दैट इज वाई डिवाइडेड बाय 60. नाउ दिस इज 30, अनवर की स्पीड इज ऑल्सो 30 प्लस वाइफ की स्पीड इज व्हाट वी नीड टू फाइंड आउट. दिस इज हाउ मच, 7.57 जा, दिस इज 7.58 जा. So 30 plus W is equal to 8/7 of 30. तो वाइफ की स्पीड कितनी आ जाएगी, है ना, ये 30 इधर आ जाएगा, तो वाइफ की स्पीड हो जाएगी 8/7 of 30 minus 30, which is 30 common, 8/7 minus 1, which is 30 common, 8/7 minus 1 is 1/7, है ना. So वाइफ की स्पीड इज 30/7, वाइफ की स्पीड इज 30/7. सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है. लास्ट क्वेश्चन ऑफ टाइम स्पीड डिस्टेंस 1. फ्लाइट ए स्टार्टेड फ्रॉम सिटी पी एट 4 AM local time and reached city Q at 8 AM local time. It started back from Q at 8 PM, ठीक है, local time, and reached P at 10 PM local time. If the speed of A for either direction was 800 kilometers, distance between P and Q क्या है. इसके पहले एक रियल लाइफ एग्जांपल या फिर एक ऐसा एग्जांपल समझते हैं जो आपको समझ में आए. लेट अस से मुंबई है एंड सिंगापुर, है ना, इनके बीच में क्या है, टाइम डिफरेंस है, लेट अस से 1 आवर, है ना. टाइम जोन डिफरेंट रहता है ना. अभी इंडिया में अगर शाम के 5 बजे है तो सिंगापुर में शाम के 6 बजे रहेगी, ठीक है. लेट अस से एक फ्लाइट है वो 8 AM को निकलती है, एंड फ्लाइट ड्यूरेशन जो है, फ्लाइट ड्यूरेशन जो है वो 3 आवर्स का है. तो मुंबई के हिसाब से वो 11 AM को पहुंच जाएगी, बट सिंगापुर में तो 12 PM बजे है ना, सिंगापुर में तो 12 PM बजे है ना. सो व्हाट इज दिस, दिस
मतलब अपने को लगता है 4 आवर्स का है, but this 4 hours is nothing but 3 + 1, no? This flight duration and this time difference. So flight duration plus time difference ऐसा आएगा यहाँ पे। ठीक है। अभी सिंगापुर से लेट अस से शाम को 4 PM को फ्लाइट निकलती है, तो फ्लाइट ड्यूरेशन तो अभी भी 3 आवर्स का है ना? तो उस हिसाब से सिंगापुर के हिसाब से वो 7 PM को पहुंचनी चाहिए मुंबई, है ना? बट वो पहुंचती है 6 PM को ही मुंबई। वाई? बिकॉज ऑफ द टाइम डिफरेंस, है ना? तो मेरे को फ्लाइट ड्यूरेशन लगती कितनी की है? 2 आवर्स की लगती है, बट इट इज एक्चुअली नथिंग बट 3 - 1। 3 आवर्स का फ्लाइट ड्यूरेशन माइनस 1 आवर का टाइम डिफरेंस। सो इट इज एक्चुअली नथिंग बट फ्लाइट ड्यूरेशन माइनस टाइम डिफरेंस। ठीक है ना? ये कंसेप्ट है, बेसिक सा कंसेप्ट। अपने को लगता है कि मुंबई से सिंगापुर जाने के लिए 4 घंटे लगेंगे, बट लगते 3 घंटे ही है। बट 1 घंटे का टाइम डिफरेंस ऐड हो जाता है, एंड सिंगापुर से मुंबई आने के लिए 2 ही घंटे लगते हैं, ऐसा हमको लगता है, बट एक्चुअली लगते 3 घंटे ही है, बट वो टाइम डिफरेंस एलिमिनेट हो जाता है। ठीक है, तो वही है। फ्लाइट ए स्टार्टेड फ्रॉम सिटी पी एट 4 AM लोकल टाइम एंड रीच्ड क्यू एट 8 AM। इट स्टार्टेड, तो ये मेरे को कितना लग रहा है? 4 आवर्स का लग रहा है। इट स्टार्टेड फ्रॉम क्यू एट 8 PM एंड रीच्ड एट 10 PM, है ना? तो यहाँ पे कुछ तो टाइम ड्यूरेशन होगा, एंड कुछ एक फ्लाइट ड्यूरेशन भी होगा, है ना? मेरे को जाते समय लग रहे हैं 4 घंटे, वापस आते समय लग रहे हैं 2 ही घंटे। तो ये डेफिनेटली फ्लाइट ड्यूरेशन प्लस टाइम डिफरेंस रहेगा, और ये फ्लाइट ड्यूरेशन माइनस टाइम डिफरेंस रहेगा। तो F+T इज 4 आवर्स, F-T इज 2 आवर्स। दोनों को ऐड करेंगे तो 2F इज इक्वल टू 6 आवर्स, F इज इक्वल टू 3 आवर्स, है ना? F इज इक्वल टू 3 आवर्स। नाउ दैट फ्लाइट ड्यूरेशन इज ऑफ 3 आवर्स एंड स्पीड, है ना? स्पीड ऑफ ए either direction is 800 kilometers. So this is flight का time. Speed is 800 kilometers per hour. तो total time, total distance कितना है पी एन क्यू? इट इज स्पीड इनटू टाइम। स्पीड है 800 की, टाइम कितना लग रहा है? 3 आवर्स का, तो टोटल डिस्टेंस इज 2400 किलोमीटर्स। 2400 किलोमीटर्स। ठीक है, दिस इज हाउ दिस क्वेश्चन कैन बी डन। ठीक है, so here we finish time speed distance 1. Let us continue with time speed distance 2. In today's session we are going to look at the concept of trains and boats and streams. Okay, so let us first understand the concept of trains. Time taken by train to cross anything, let us say T is time taken by train to cross anything, है ना? What are those anythings वो discuss करेंगे। Time taken by train to cross anything, T, is nothing but addition of length upon relative speed. ठीक है, so those anythings can be pole. Time taken by train to cross a pole, let us say length of the train is L and there is a pole P, there is a pole P. ठीक है, अभी this is the moment when the train has started crossing the pole and this is the moment when the train has crossed the pole, correct? So engine to engine कितना distance? Engine to engine, the distance is length of the train only. And what is the relative speed? Speed of the train only, and because the pole is stationary, and other assumption is the width of the pole is negligible in front of length of the train. This is what we are assuming. So time required will be addition of length, which is only length of the train, upon relative speed, which is only speed of the train. Okay, next case, time taken by train to cross anything. Now that anything can be bridge or a tunnel
or a platform. ठीक है, तो there is a train of length L and a platform of length P. This is the moment when the train has started crossing the platform, and this is the moment when the train has crossed the platform. तो ये इंजन टू इंजन कितना डिस्टेंस है, L plus P है ना, ये L P. तो डिस्टेंस कितना ट्रैवल करना पड़ा, L plus P. What is the relative speed? Only speed of the train, because the platform is stationary. Because the platform is stationary. So time required is addition of length upon relative speed. Next, time taken by train to cross a car or a bike or a cycle or a man running. है ना, मतलब basically any moving object. ठीक है. So there is a train of length L. इसकी स्पीड है ST. And there is a car जिसकी स्पीड है SC. Length of the car is negligible in front of length of the train. This is the assumption which we are doing. Both the train and the car, they are moving in same direction. This is the moment when the train has started. This is the moment when the train has started crossing the car. And this is the moment when the train has completely crossed the car. Okay, let us say this distance is X. This is L. What is the relative speed? Relative speed is ST minus SC. And what is the distance traveled by train? X plus L. But whenever we consider relative speed in same direction, we consider the extra distance traveled by the faster one. So X is the common distance. Extra distance traveled by the faster one. We have studied it in the relative speed concept. Whenever we consider relative speed in same direction, we consider the extra distance, which is L. In this case, traveled by the faster. So time required will be addition of length upon relative speed ST minus SC. Addition of length upon relative speed, that is ST minus SC. ठीक है. Now suppose the car and train are moving in opposite direction. This is the length of the train. This is ST. And there is this car which is coming towards the train. Okay. This is the moment when the train and car, they have started crossing each other. What is the relative speed? It is ST plus SC. Yes or no? Now, what is the initial distance? For this, listen to me carefully. If speed of the train is ST, speed of the engine is also ST, speed of this middle part is also ST, and this speed of this end part is also ST. And this is the moment when the two objects have started crossing each other. And when this last part of the train and this car meets, the train will cross each other, and the train will cross the car. Yes or no? है ना, जैसे ही ये लास्ट दो पार्ट्स मिलेंगे, वैसे ही वो ट्रेन जो है वो कार को क्रॉस कर देगी. So the relative speed of this point and this point is ST plus SC. What is the distance traveled? It is nothing but whenever we consider relative speed in opposite direction, we consider the initial distance between them. And whenever we consider relative speed in opposite direction, we consider the initial distance between them. So time required is length of the train upon ST plus SC. Length of the train upon ST plus SC. है कि नहीं? So ये eventually it is boiling down to this formula. ठीक है. Then the last case, D part, train crossing another train. Again in same direction and in opposite direction. So there is train L1 with speed S1. There is this train L2 with speed S2. This is the moment when the faster train has started crossing the slower train. And this will be the moment when the faster train will cross the slower train.
Yes or no? Now let us say this distance is x. What is this engine to engine distance? It is x plus L2. What is this engine to engine distance? This L2, this x, this L2, and then this L1. Correct. Now, what is their relative speed? Relative speed is S1 minus S2 as both the trains are moving in same direction. So what is the distance? Distance is nothing but addition. Now, whenever we consider relative speed in same direction, we consider the extra distance traveled by the faster one. So this is a common distance, x plus L2, x plus L2 is common distance. This L1 plus L2 is the additional distance traveled by the faster one. That is L1 plus L2 is the additional distance traveled by the faster one. Okay, so what is the time required? It is nothing but L1 plus L2 upon S1 minus S2. Okay, again, length of the train up, addition of length upon relative speed. Now, if the two trains are moving in opposite direction, what will be the case? So this is the train L1 moving with the speed S1. This is another train L2 moving with the speed S2. These two trains are moving in opposite directions. So this is the moment when the trains have started crossing each other. And what we want to make these 2 points meet, right? दोनों के end के डब्बे मिल जाने चाहिए. That will be the moment when the trains have crossed each other. तो ये end वाले डब्बे का speed is S1, ये end वाले डब्बे का speed is S2, है ना? तो what is their relative speed? S1 plus S2. What is their distance? L1 plus L2. है ना? Whenever we consider relative speed in opposite direction, we consider the initial distance between them, which is L1 plus L2. So what is the time required? Addition of length upon relative speed S1 plus S2. So everywhere it is nothing but addition of length upon relative speed. This is the only formula that you have to work. Okay. First question. What is the time taken by a train 800 meters long to cross an electric pole if the speed of the train is 40? ठीक है, ट्रेन है 800 वाली, इलेक्ट्रिक पोल है, स्पीड है 40 kilometers per hour. So time required will be addition of length, which is only length of the train, upon relative speed, which is 40 kilometers per hour, but into 5 by 18 करना होगा. So this is 41, this is 40, 20, this is 5 1, this is 5 4. तो ये क्या आ जाएगा 4 upon 1 by 18, which is 4 into 18 by 1, which is 72. है ना? तो time required will be 72 seconds. Very easy. Second question. What is the time taken by train 650 meter long? So train is 650 meters long, traveling at 72 kilometers per hour. So 72 kilometers per hour has to be converted into meters per second. So 18 ones are 18 fours are. So that is 20 meters per second to cross a platform of 750 meters. So ये platform cross करना है 750 meters. Time required will be addition of length, which is 650 plus 750, that is 1400. Upon relative speed, in this the platform is stationary, so speed of the train it's 20. So time required would be 70 seconds. Very easy. How long will a train 250 meter long traveling at 90 kilometers per hour take to cross 200 meter long, cross a train 200 meter long at 36 kilometers per hour in the same direction? ठीक है, there is a train जिसकी length है 250, it is traveling at 90. If we convert it into meters per second, it will be 25 meters per second. Okay, this conversion is nothing but 5 by 18 से multiplication. है ना? How long will it take to cross a train which is 200 meter long traveling at 36 kilometers per hour? 36 into 5 by 18 करेंगे तो रिलेटिव तो ये स्पीड आ जाएगी 10 meters per second. 10 meters per second. So कितना टाइम लगेगा?
टाइम लगेगा एडिशन ऑफ लेंथ 250 प्लस 200 दैट इज 450 अपॉन रिलेटिव स्पीड 25 माइनस 10 दैट इज 15 तो दैट इज 30 सेकेंड्स का टाइम लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन के लिए मैं बेटा रहा हूं। What is the time taken by a 750-meter long train? 750-meter long train traveling at 99 to cross a boy running at 9 kilometers per hour towards the train. So the boy is running at 9 kilometers per hour towards the train. Time required will be addition of length, which is 750 upon relative speed. So 99 plus 9 will be 108. But these speeds are in kilometers per hour. So I'll have to convert it into meters per second. So this is 18 ones are, this is 18 six are. So what we have 750 by 30. So this 0 1. Time required will be 25 seconds. 25 seconds. Okay. Moving forward to fifth question. A train crosses two bridges 430 meters and 550 meters long in 30 seconds and 36 seconds respectively. What is the speed of the train? Simple सा है. Let us say length of the train is L. This is 430 meters. ठीक है. This is 430 meters. And इसको क्रॉस करने के लिए लगते हैं 30 seconds. Then there is another train जिस मतलब same train है L. There is a bridge of 550 meters. And इसको क्रॉस करने के लिए लगते हैं 36 seconds. ठीक है, तो these 30 seconds will be addition of length L plus 430 upon speed of the train. These 36 seconds will be length of the train plus 550 upon speed of the train. Okay, upon speed of the train. ठीक है, तो अभी मेरे को स्पीड ऑफ द ट्रेन चाहिए. सो 30 st is equal to L plus 430. That is 30 st minus 430 is equal to L. This is 36 st speed of the train is equal to L plus 550. This 36 st minus 550 is nothing but length of the train. दोनों length of the train हम equate कर सकते हैं, है ना. So 30 st minus 430 is equal to 36 st minus 550, है ना. 550 इधर आएगा तो पॉजिटिव 550 माइनस 430 is 120 एंड ये 30 st इधर आएगा तो दैट इज 6 st. तो st will be 20 meters per second. Speed of the train is 20 meters per second. I'll have to convert it into kilometers per hour. So 20 into 18 by 5. 8 4 ones are, this is 5 ones are, this is 5 fours are. 4 into 18 is 72 kilometers per hour. 72 kilometers per hour is the answer. ठीक है, moving forward to sixth question. Sixth question. A train traveling at 60 kilometers per hour crosses a cyclist who is cycling at 12 kilometers per hour in the opposite direction in 20 seconds. Find the time taken by train to cross another cyclist traveling at 20 in the same direction. ठीक है, simple सा question. A train traveling at 60 kilometers per hour crosses a cyclist. तो ट्रेन है जिसका लेंथ है L एंड स्पीड है 60 की एंड यहाँ पे साइक्लिस्ट है जिसकी स्पीड है 12 की एंड इसको करने के लिए लगते हैं 20 सेकंड्स. सो दिस टाइम रिक्वायर्ड इज एडिशन ऑफ लेंथ अपॉन रिलेटिव स्पीड दैट इज 60 माइनस 12. बट ये किलोमीटर्स पर आवर में है तो 5 पे 18 करना होगा. सो L अपॉन 48 इंटू 5 by 18. So length of the train में मिल जाएगी 28 into 48 into 5 by 18. ठीक है ना. तो this is 6 3s are, this is 6 8s are. ऐसे ही रहो. So L into 20 into 8 into 5 by 3. This is the length of the train. Don't solve it. Find the time taken by train to cross another cyclist. So length of the train is L.
speed 60 है, and another cyclist is traveling at 20 kilometers per hour in the same direction. He is traveling at 20 kilometers per hour in the same direction. Time कितना लगेगा? Time लगेगा length of the train upon relative speed. What is the length of the train? 20 into 8 into 5 by 3. What is the relative speed? Relative speed is 60 minus 20, no? 60 minus 20, that is 40 into 5 by 18 भी करना ही पड़ेगा यहाँ पे क्योंकि it is in kilometers per hour. So 5 8s are 40. This is 5 8s are 40. So what we have 20 by 3 divided by 18 by 5 है ना, divided by 5 by 18 वो ऊपर आके 18 by 5 हो जाएगा. 5 ones are, this is 5 fours are, this is 3 ones are, this is 3 6 are. So this is 24 seconds. ऐसा टाइम आ जाएगा, 24 seconds का टाइम आ जाएगा. ठीक है. Moving forward to 7th and 8th question. These are combined questions. ठीक है. These questions are based on the following data. Train T of length 100 meter moving at 54 kilometers per hour. 54 kilometers per hour is nothing but 15 meters per second. इतना कैलकुलेशन हो जाना चाहिए. And train U of length 150 meters is moving at 90 kilometers per hour. That is 25 meters per second. On parallel track enters a 200 meter long tunnel at the same instant from opposite directions. तो ये टनल है 200 मीटर का. इधर से ट्रेन 1 आई. ट्रेन 1 कितनी 100 मीटर्स की, 15 की स्पीड से. एंड सेम टाइम पे दूसरी ट्रेन भी आई. सेम टाइम पे दूसरी ट्रेन भी टनल में एंटर की जिसकी लेंथ है 150 मीटर्स एंड इसकी स्पीड है 25, है ना. अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे. विच ट्रेन एग्जिट्स द टनल फर्स्ट एंड द मोमेंट इट एग्जिट्स व्हाट लेंथ ऑफ द अदर ट्रेन इज स्टिल इन द टनल. ठीक है, देखते हैं. तो पहले तो देखते हैं कौन सी ट्रेन पहले निकलती है. तो ये ट्रेन 1 है, ट्रेन 2 है. ट्रेन 1 का टाइम निकालते हैं. इट विल बी एडिशन ऑफ लेंथ विच इज 300 प्लस 100 प्लस 200, दैट इज 300 upon relative speed which is only 15 seconds, 15 meters per second because the tunnel is stationary. So 300 upon 15, that is 20 seconds लगेगी. ट्रेन 2 को कितना टाइम लगेगा वो देखते हैं. टाइम रिक्वायर्ड will be addition of that is 150 plus 200, that is 350 upon relative speed which is only speed of train which is 25. तो इसको कितना टाइम लगेगा, 14 seconds लगेगा. ठीक है ना. तो which train, अच्छा, so this is train T and this is train U. Which train will exit the tunnel first? So train U exits the tunnel first. Then what length of the other train is still in the tunnel? And at the moment it exits, what length of the other train is still in the tunnel? तो ये वाली ट्रेन है ना, तो ये वाली जो टी ट्रेन है ये कितना टनल के अंदर है यही पूछा है. तो लेट अस से डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम. ये इंजन 14 सेकंड में कितना ट्रैवल कर लेता है ये देखते हैं. स्पीड कितनी है 15 की, टाइम कितना है 14 सेकंड्स, है ना. द मोमेंट व्हेन फास्टर ट्रेन हैज क्रॉस द टनल. तो ये कितना हो गया 210 मीटर्स, है ना. तो ये वाली जो ट्रेन है जो यहाँ पे क्रॉस करना स्टार्ट की वो 210 मीटर्स मतलब ये 200 मीटर और 10 मीटर आगे, इतने आगे आ जाएगी. बट ये टोटल ट्रेन तो 100 मीटर्स की है तो ये 10 मीटर ही बाहर रहेगी तो 90 मीटर्स पीछे ही रहेगी, है ना. तो ट्रेन यू विल लीव फर्स्ट और एग्जिट द टनल फर्स्ट एंड द मोमेंट व्हेन ट्रेन यू एग्जिट्स द टनल 90 meters of train T is still in the tunnel. Okay. Moving forward, how far and is the point where the rear ends of the two train cross each other from the entry point of the slower train. From the entry point of the slower train मतलब ये यहाँ है ना. एंट्री पॉइंट ऑफ द स्लोअर ट्रेन मतलब ये यहाँ से वो कितने दूर है ये पूछा है. ठीक है ना. तो ये 200 मीटर है. ये ट्रेन है जिसकी लेंथ है 100 एंड ये ट्रेन है जिसकी लेंथ है 150. दोनों अपने अपने 15 और 25 की स्पीड से आ रहे हैं. दे बोथ आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन. तो मेरे को ये पॉइंट ऑफ
कांटेक्ट देखना है और वो इस वाले पॉइंट से कितना अंदर है ये पता करना है। तो मेरे को व्हेन विल दे मीट, व्हेन दीज टू पॉइंट्स मीट, है ना, दोनों ट्रेन की रियर एंड्स जब मीट करेंगे तब वो दोनों ट्रेन क्रॉस कर लेगी एक दूसरे से। तो ये रियर एंड की भी तो स्पीड, अगर पूरे ट्रेन की स्पीड 15 है तो रियर एंड के भी स्पीड 15 ही रहेगी, है ना। अगर इंजन की स्पीड 15 मीटर्स पर सेकंड है तो लास्ट डब्बे की स्पीड भी 15 मीटर पर सेकंड रहेगी। सिमिलरली इस ट्रेन के रियर एंड की स्पीड 25 रहेगी। पहले तो निकालते टाइम कितना लगेगा, है ना। व्हाट इज द रिलेटिव स्पीड? रिलेटिव स्पीड इज 15 प्लस 25, 15 प्लस 25, that is 40. Now whenever we consider relative speed in opposite direction, we consider the initial distance between these 2 points. So how much is that? 100 plus 200 plus this 100, that is 300, 150, that is 450. So this is the time. तो टाइम कितना हुआ ये? 45/4, 45/4 सेकेंड्स हो गए। अभी 45/4 सेकेंड्स में ये लास्ट वाला डब्बा कहाँ तक पहुंचता है वो देखते हैं। तो 45.4 सेकेंड्स में डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। ये लास्ट वाले डब्बे की स्पीड कितनी है? 15। टाइम कितना है? 45/4। तो 45 इंटू 15 कितना होगा? 450 प्लस 25, 225, दैट इज 675/4। 675/4 कितना होगा? 150, 160, 150, 165, 168.5 आएगा, 168.5 मीटर्स ऐसा डिस्टेंस है ना। 168.75 मीटर है ना, 3.75 रहेगा ना। ठीक है, तो अभी ये लास्ट डब्बा 168.75 मीटर्स आगे आ जाएगा, है ना। दिस डिस्टेंस इज 168.75 मीटर्स। तो उसमें से ये 100 मीटर्स हट जाएगा। ये पॉइंट से कितना दूर है? 68.75 मीटर्स। ये पॉइंट से 68.75 मीटर्स दूर। सिंपल एकदम। ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड टू द कंसेप्ट ऑफ बोर्ड्स एंड स्ट्रीम्स। सो बोर्ड्स एंड स्ट्रीम्स में कैसे रहेगा? लेट अस से b इज द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर, है ना। स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। स्टिल वाटर बोले तो लेक, है ना। लेक में फ्लो नहीं होता है ना, थोड़ा बहुत जो फ्लो रहता है वो बिकॉज ऑफ द विंड रहता है, बट एकदम निग्लिजिबल फ्लो रहता है इन अ लेक, है ना। तो वैसा स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर हम बी बोल रहे हैं, मतलब आपकी रोइंग कैपेसिटी। ठीक है, देन स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज डब्ल्यू, है ना। अगर आप रिवर में जाओगे तो रिवर का एक फ्लो रहता है। स्पीड ऑफ द स्ट्रीम बोलते हैं हम उसको, या स्पीड ऑफ द रिवर बोलते हैं, या फ्लो ऑफ द वाटर बोलते हैं, जो कहना है वो, है ना। तो लेट अस से देयर इज अ रिवर जिसका स्ट्रीम है, जिसका स्पीड है डब्ल्यू का, एंड देन देयर इज अ बोट मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ द स्ट्रीम, है ना। मतलब जिस डायरेक्शन में रिवर फ्लो हो रही है उसी डायरेक्शन में बोट फ्लो हो रही है। तो इससे अपनी स्पीड बढ़ेगी कि कम होगी? ऑब्वियसली बढ़ेगी, है ना। तो योर स्पीड विल बिकम b प्लस डब्ल्यू, है ना। अगर आप कभी रिवर में स्विमिंग करने गए हो तो आपको पता चलेगा, रिवर में इफ यू स्विम विद द करंट तो आपकी स्पीड बढ़ती है ना। तो वही चीज है यहाँ पे भी। तो इफ द बोट इज गोइंग विद द फ्लो ऑफ द वाटर तो स्पीड बढ़ेगी। नाउ व्हाट इज द बोट डूइंग? इट इज गोइंग डाउन ना, so that is why it is speed downstream. This is speed downstream. ठीक है, which is b plus w, ध्यान में रखो, है ना। स्पीड डाउनस्ट्रीम which is b plus w। फिर रिवर तो अपनी बेचारी वैसे ही फ्लो करेगी, बट इफ यू आर गोइंग अगेंस्ट द करंट, इफ यू आर फ्लोइंग अगेंस्ट द रिवर, मतलब अगर आप कभी रिवर में स्विमिंग करते हो एंड करंट के अगेंस्ट स्विमिंग करते हो तो आपकी स्पीड कम हो जाती है ना। तो आपकी स्पीड क्या हो जाएगी? b माइनस डब्ल्यू,
ठीक है, मॉड वैल्यू लेंगे एंड यू आर मूविंग अप, है ना, यू आर मूविंग अप, तो स्पीड अपस्ट्रीम हो जाएगी। व्हाई इज इट मॉड वैल्यू? क्योंकि स्पीड निगेटिव हो नहीं सकती एंड कभी कभी W कैन बी ग्रेटर देन D, but in most of the cases we will take speed upstream as B minus W only, ठीक है ना। so this is speed upstream, ठीक है। बाकी तो फॉर्मूला सेम है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बस अभी स्पीड में वेरिएशन आ गया कि स्पीड डाउनस्ट्रीम है कि स्पीड अपस्ट्रीम, ओनली डिफरेंस यही है। आगे बढ़ते हैं, अभी स्पीड अपस्ट्रीम आ गया, तो एक चीज मेरे को बताओ, ये दो, एक रिवर है डब्लू, इसमें दो बोट्स सेम डायरेक्शन में फ्लो कर रही हैं, ठीक है, तो इनका रिलेटिव स्पीड क्या रहेगा ये देखते हैं। तो पहले वाले बोट का रिलेटिव स्पीड क्या रहेगा, v1 प्लस डब्ल्यू, दूसरे वाले बोट का रिलेटिव स्पीड क्या रहेगा, v2 प्लस डब्ल्यू, है ना। दे बोथ आर मूविंग इन सेम डायरेक्शन, तो माइनस आएगा, है ना, इससे क्या हो जाएगा, ये डब्ल्यू डब्ल्यू कैंसिल हो जाएगा, v1 माइनस v2 हो जाएगा, है ना। तो ये जो रिलेटिव स्पीड है, इट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन द स्पीड ऑफ द वाटर, ठीक है। अभी वैसे ही एक और रिलेटिव स्पीड W ले लेते हैं, ये B1 it's going with the flow, B2 is going against the flow, they both are moving in opposite direction, what is their relative speed, ये निकालना है। तो पहले वाले बोट की रिलेटिव स्पीड क्या रहेगी, B1 प्लस, ओवरऑल स्पीड डाउनस्ट्रीम क्या रहेगी, B1 प्लस W, दूसरे वाले बोट की क्या स्पीड रहेगी, B2 माइनस W, बट दे बोथ आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन, इसलिए अपोजिट, है ना, इसलिए पॉजिटिव रहेगा, है ना। तो ये W और W कट हो जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो हो रहे हैं, इसलिए प्लस रहेगा, ठीक है। तो रिलेटिव स्पीड कितनी आ गई इनकी, B1 प्लस B2, है ना, इनकी रिलेटिव स्पीड क्या आ गई, B1 प्लस B2, ठीक है। नाउ अगर आप देखोगे सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो भी रिलेटिव स्पीड इज नॉट डिपेंडेंट ऑन द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो भी रिलेटिव स्पीड इज नॉट डिपेंडेंट ऑन द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। इसका रियल लाइफ एग्जांपल अगर आप देखो, तो अगर आप एक कार में जा रहे हो, है ना, या फिर एक ट्रेन में जा रहे हो, एंड वो ट्रेन में अगर आप बॉल ऊपर फेंकोगे, तो वो बॉल बराबर आपके हाथ में आएगा, है ना। तो what is the reason behind that, because you and that ball, you both are going in the same stream, which is the train, ठीक है ना, इसलिए ये ऐसा होता है। बट आप ध्यान में रखो, रिलेटिव स्पीड इज नॉट डिपेंडेंट ऑन स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, इट इज डिपेंडेंट ओनली ऑन द स्पीड ऑफ द बोट्स, ठीक है। अब ये कंसेप्ट हम कहाँ कहाँ पे लगा सकते हैं, बोट्स एंड स्ट्रीम्स में लगा सकते हैं, है ना। सेम कंसेप्ट हम साइकिल एंड विंड पे लगा सकते हैं, है ना। मतलब इफ यू आर विंड के डायरेक्शन में साइकिल चला रहे हो, तो आपकी स्पीड, विंड के डायरेक्शन में साइकिल चला रहे हो तो आपकी स्पीड बढ़ेगी, विंड के अगेंस्ट साइकिल चला रहे हो तो आपकी स्पीड कम होगी। सेम कंसेप्ट हम कहाँ पे, स्विमिंग में भी लगा सकते हैं, है ना। जैसे अगर आप रिवर के डायरेक्शन में स्विमिंग कर रहे हो, जो रिवर के फ्लो के डायरेक्शन में स्विमिंग कर रहे हो, तो आपकी स्पीड बढ़ेगी। अगर आप रिवर के फ्लो के अगेंस्ट स्विम कर रहे हो तो आपकी स्पीड कम होगी। सेम कंसेप्ट आप एस्केलेटर पे भी लगा सकते हैं, है ना, एस्केलेटर जो मॉल्स में होता है ना। तो अगर एस्केलेटर ऊपर जा रहा है एंड आप भी ऊपर जा रहे हो, तो ये आपकी स्पीड बढ़ेगी। एस्केलेटर ऊपर जा रहा है और आप नीचे आ रहे हो, तो आपकी स्पीड कम हो जाएगी, है ना। तो सेम ही कंसेप्ट है जो हर जगह हम लगा सकते हैं, ठीक है। लेट अस मूव टू द क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 9, नाइन्थ क्वेश्चन देखते हैं। Anand can row a boat in still water at a speed of 5 kilometers per hour. The speed of the stream is 3 kilometers per hour. Find the time taken to row 40 kilometers downstream. क्या बेसिक सा क्वेश्चन है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, है ना, डाउनस्ट्रीम जाना है, 40 किलोमीटर है, स्पीड डाउनस्ट्रीम क्या हो जाएगी, स्पीड डाउनस्ट्रीम विल बी b प्लस w, तो b की वैल्यू क्या है 5, w की वैल्यू क्या है 3,
सो दैट इज 8. टाइम कितना लगेगा? 40/8 दैट इज 5 hours. ठीक है, 10th क्वेश्चन देखते हैं. A and B are 2 points on a river. A and B are 2 points on a river. A and B are 2 points on a river. Akbar took 6 hours to go from A to B. है ना, तो A से B जाने को 6 hours लगे. And 8 hours to go from B to A. 8 hours to go from B to A. Find the ratio of the speed of the boat in still water and the river. है ना, तो B by W का रेशियो निकालना. So here what we have, distance equal to speed into time. Distance is D. Speed will be B plus W. Time will be 6 hours. ठीक है, वापस आते समय distance is still D, but speed will be B minus W क्योंकि अपस्ट्रीम आ रहा है. Time will be 8 hours. ठीक है ना, तो डी डी कॉन्स्टेंट है या फिर सीधा डिवाइड करो. तो ये क्या आ जाएगा? 1/6B plus 6W अपॉन 8B minus 8W. ये 1/1 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे लिखता हूँ 8B minus 8W इज इक्वल टू 6B plus 6W. है ना, तो 8W इधर जाएगा तो 14W हो जाएगा. 6B इधर जाएगा तो 2B हो जाएगा. तो B by W is 14/2 that is 7/1. 7/1. Find the ratio of speed in still water and river. So 7:1 का ratio of speed. Next, 11th question. Anand takes 90 seconds to move up an accelerator which is moving downward. ठीक है, तो आनंद ऊपर जा रहा है, एस्केलेटर नीचे आ रही है. इस केस में उसको 90 सेकेंड्स लगता है. ठीक है, एंड ही टेक्स 30 seconds to move down the same escalator. तो आनंद नीचे आ रहा है, एस्केलेटर भी नीचे आ रही है. In this case, he is taking 30 seconds. How much time will he take to go up or down when the escalator is switched off? ठीक है, तो डिस्टेंस है यहाँ पे d, डिस्टेंस है यहाँ पे d, यहाँ पे भी डिस्टेंस है d. स्पीड डिस्टेंस है dt. स्पीड कितनी है इसमें? a minus e. टाइम कितना लगा? 90 seconds. In this case, distance is d. स्पीड कितनी है? a plus e. टाइम कितना लगा? 30 seconds. a minus e है. ठीक है, dt कॉमन है तो a minus e into 90 is equal to a plus e into 30. तो 31 का, this is 33 का. 3a minus 3e है ना, is equal to a plus e, क्योंकि ये तो कट गया ना, तो e इधर आ जाएगा तो 4e आ जाएगा ये, एंड a इधर आ जाएगा तो 2a आ जाएगा. तो a is equal to 2e. a is equal to 2e. ठीक है, how much time will he take to go up or down when the escalator is switched off? escalator अभी switched off है, इसको ऊपर जाना है ना. तो जब escalator चल रही थी, है ना, escalator is going down, आनंद is also going down, तब इसकी स्पीड थी 2e, तब इसकी स्पीड थी 2e, एंड इसकी स्पीड थी ये, कितने हो गए? 9. तब वो 30 सेकेंड्स में कंप्लीट कर देता था. मतलब डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड हो जाएगी 3e एंड टाइम लगता था 30 सेकेंड्स. अभी ये ऊपर जाने का है या फिर नीचे आने का है, इसकी स्पीड तो 2e ऐसी ही रहेगी. डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड अभी 2e, तो टाइम कितना लगेगा ये पूछा है. डिस्टेंस तो अभी भी कांस्टेंट है, तो 2e into t इज इक्वल टू 3e into 30. e कट गया. टाइम रिक्वायर्ड विल बी 90/2 दैट इज 45 seconds. ठीक है, तो 45 seconds लगेगी. ठीक है, 12th question. When Ramu walks down, he takes 1 minute on an escalator which is moving down. है ना, रामू भी नीचे जा रहा है, एस्केलेटर भी नीचे जा रही है,
and he takes 1 minute, so let us say 60 seconds, है ना, कन्वर्ट कर दिए, but takes 40 seconds when he runs down, है ना, तो ये वॉक करता है तो 60 seconds, बट वही जब वो रन करता है तो 40 seconds लगते हैं एस्केलेरेटर पे, which is moving down. He takes 20 steps when he is walking, whereas 30 steps when he is running. Calculate the number of steps in the escalator. मतलब ये distance पता करना है. पहले तो पता हो मेरे को distance constant है. Distance is constant. ठीक है. तो walking इस केस में स्पीड क्या है? walking plus escalator. इस केस में स्पीड क्या है? running plus escalator. इस केस में टाइम कितना लग रहा है? 60 सेकेंड. इस केस में टाइम कितना लग रहा है? 40 सेकेंड्स. तो डिस्टेंस तो कांस्टेंट है, सो स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम. तो जब वॉकिंग एंड प्लस एस्केलरेटर है तब 60 सेकेंड्स लगते हैं. जब रनिंग प्लस एस्केलरेटर है तब तब कितने लगते हैं? रनिंग प्लस एस्केलरेटर है तब कितने लगते हैं? तब लगते हैं 40 सेकेंड्स. ठीक है ना. तो वॉकिंग प्लस एस्केलरेटर, रनिंग प्लस एस्केलरेटर, दिस इज 2/3. क्रॉस मल्टीप्लाई करेगी तो 3W प्लस 3E इज इक्वल टू 2R प्लस 2E. तो ये 2E इधर आ जाएगा तो E बचेगा. 3W इधर जाएगा तो 3W इधर जाएगा तो 2R माइनस 3W ऐसा हो जाएगा. ठीक है, जिससे तो ये स्पीड 0 आ जाएगी. ठीक है, एक मिनट, क्या गड़बड़ कर दिया हमने? ओके, मेरे को डिस्टेंस निकालना है. व्हेन ही इज कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स इन द एस्केलेटर. टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स इन द एस्केलेटर. ठीक है, ठीक है, मतलब मेरे को स्टेप्स निकालने हैं. वॉकिंग स्पीड कितनी है? वॉकिंग स्पीड है मेरी 20 की. ठीक है ना. नए से स्टार्ट करते हैं. 12th क्वेश्चन. एस्केलेरेटर है, इसकी ई है, डिस्टेंस है कुछ, वॉकिंग स्पीड है 20 की, टाइम लगता है 60 सेकेंड्स का. ठीक है. यहाँ पे वॉकिंग रनिंग स्पीड है 30 की, एस्केलेरेटर की स्पीड है ई, डिस्टेंस है डी का, टाइम लगता है 40 सेकेंड्स का. डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, तो स्पीड है 20 प्लस ई, टाइम लगता है 60. यहाँ पे डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, 30 प्लस ई, टाइम लगता है 40 सेकेंड्स का, है ना. वी वांट टू फाइंड आउट डी, तो एस्केलेरेटर को हटाते हैं अपन, है ना. तो डी बाय 60 माइनस डी बाय 60 इज इक्वल टू 20 प्लस ई. तो d बाय 60 माइनस 20 इज इक्वल टू ई, है ना. यहाँ पे d बाय 40 इज इक्वल टू 30 प्लस ई. तो d बाय 40 माइनस 30 इज इक्वल टू ई. दोनों के राइट हैंड साइड इक्वेट हो गए, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वेट करते हैं. d बाय 60 माइनस 20 इज इक्वल टू d बाय 40 माइनस 30. ठीक है, तो ये इधर आएगा तो ये इधर आएगा तो d बाय 40 माइनस d बाय 60, और ये माइनस 30 इधर आएगा तो प्लस 10. ठीक है, इसको यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो 10 इज इक्वल टू d कॉमन, d बाय 20 कॉमन, 1/2 माइनस 1/3, 1/2 माइनस 1/3 इज d बाय 20. 1/2 माइनस 1/3, ये बेसिक्स है 1/6, है ना. तो ये d कितना आ गया मेरा? इट विल बी इक्वल टू 10 इंटू 20 इंटू 3. 10 इंटू 20 इंटू 3, 600 स्टेप्स, है ना. 600 स्टेप्स का एस्केलेरेटर. सही है ना. मूविंग फॉरवर्ड टू 13th क्वेश्चन. A boat travels from point P to Q upstream and returns from Q to point P downstream. The boat traveled a total of 96 kilometers. ठीक है, ठीक है. P to Q पहले अपस्ट्रीम जाता है एंड फिर वापस भी आ जाता है. टोटल 96 किलोमीटर्स, तो जाना 48 किलोमीटर्स, वापस आना 48 किलोमीटर. सही है कि नहीं? है कि नहीं? If the round trip takes 9 hours and the speed of the boat in still water is 8 kilometers per hour, पूरा जाके आने को टाइम अपस्ट्रीम प्लस टाइम डाउनस्ट्रीम इज 9 hours. तो टाइम अपस्ट्रीम प्लस टाइम डाउनस्ट्रीम इज 9 hours. And the speed of boat in still water is
8 kilometers per hour. So speed of water is speed of boat in still water is 8 kilometers per hour. तो B की वैल्यू दे रखी है. अच्छा 8 kilometers per hour more than the speed of the stream. ठीक है, पूरा क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा अपने को. Speed of boat in still water is 8 kilometers per hour more than the speed of the stream. तो स्पीड ऑफ बोट इज स्ट्रीम के स्पीड से 8 किलोमीटर ज्यादा है. तो B माइनस डब्ल्यू दे रखा है मेरे को 8, विच इज स्पीड ऑफ स्ट्रीम दे रखी है मेरे को 8. फाइंड द टाइम टेकन फॉर द डाउनस्ट्रीम जर्नी. है ना, सिंपल सा क्वेश्चन है. फाइंड द टाइम टेकन फॉर द डाउनस्ट्रीम जर्नी. तो टाइम ऑफ स्ट्रीम मेरे को डिस्टेंस ऑफ स्ट्रीम पता है ना. स्पीड डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम. मेरे को डिस्टेंस अपस्ट्रीम पता है 48, मेरे को स्पीड अपस्ट्रीम पता है 8. तो टाइम कितना लगेगा, 6 घंटे का, 6 आवर्स का टाइम लगेगा. तो टाइम अपस्ट्रीम 6 आवर्स, तो टाइम डाउनस्ट्रीम ऑब्वियसली 3 आवर्स, है ना. तो टाइम टेकन फॉर डाउनस्ट्रीम जर्नी इज 3 आवर्स. ठीक है, वेरी इजी. मूविंग फॉरवर्ड टू 14th क्वेश्चन. देयर आर टू आइडेंटिकल एस्केलेरेटर्स, वन इज असेंडिंग एंड अदर इज डिसेंडिंग. ठीक है, एक एस्केलेरेटर है, आइडेंटिकल है, तो ये ऊपर जा रही है, एंड दूसरी वाली जो है वो नीचे आ रही है. A person took 90 seconds to go up using the descending escalator. है ना, पर्सन डिसेंडिंग एस्केलरेटर से ऊपर जाने को 90 सेकंड्स लगे, एंड 18 सेकंड्स टू गो अप यूजिंग द असेंडिंग एस्केलरेटर. तो पर्सन को ऊपर जाने के लिए 18 सेकंड्स लगे इन असेंडिंग एस्केलरेटर. बोथ टाइम्स वॉकिंग एट द सेम स्पीड. तो पर्सन की स्पीड सेम है. If the speed of the two escalator is same, तो escalator की भी speed same है. Then the time taken to go up or down using either of the escalator when they are switched off is how much? ठीक है, तो अगर escalator बंद रहेगी तो कितना टाइम लगेगा ये पता करना है अपने को. तो डिस्टेंस कांस्टेंट है क्योंकि आइडेंटिकल एस्केलरेटर्स है. ठीक है, तो स्पीड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टाइम है. इस केस में स्पीड कितनी है, p प्लस ई, और टाइम कितना लगा है 18 सेकेंड्स. इनवर्स प्रोपोर्शनलिटी इसलिए नीचे आएगा. इस केस में स्पीड कितनी है, p माइनस ई, तो टाइम कितना लगा है 90 सेकेंड्स. ठीक है, सो दिस इज 18 वन, दिस इज 18 फाइव, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो p प्लस ई इज इक्वल टू 5p माइनस 5e. ये 5e इधर जाएगा तो 6e बनेगा. ये p इधर आएगा तो 5p माइनस p, दैट इज 4p. तो p की वैल्यू है 6/4, दैट इज 3/2 ऑफ e. 3/2 ऑफ e. नेक्स्ट केस देखते हैं. अगर एस्केलरेटर स्विच ऑफ है तो ये कितने 3/2 ऑफ e के स्पीड से जा रहा है पर्सन, है ना, एंड एस्केलरेटर जो है वो स्विच ऑफ. दूसरे केस में जब पर्सन भी ऊपर जा रहा है 3/2 ऑफ e के स्पीड से, एंड एस्केलरेटर भी ऊपर जा रही है, इन दैट केस ही टेक्स 18 सेकंड्स ओनली ना. फिर से डिस्टेंस कांस्टेंट, स्पीड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम. तो अभी इस केस में एस्केलेटर जब बंद है तो कितना टाइम लगेगा ये पूछा है. इस केस में स्पीड कितनी है 3/2 e, एंड टाइम लगेगा लेट अस से t. इस केस में स्पीड कितनी है 3/2 e प्लस e, है ना. 3/2 e प्लस e मतलब कितना हो गया 5/2 e, एंड टाइम कितना लगा 5/2 e, एंड टाइम कितना लगा 18 सेकंड्स. e e कैंसिल हो गया, 2 2 कैंसिल हो गया. ठीक है ना, तो ओवरऑल टाइम कितना लग जाएगा, टाइम t इधर आएगा, this will be 18 into 5 by 3. तो 3 1 जा, this is 3 6 जा, तो टाइम कितना लगेगा 60 सेकंड्स. 60 सेकंड्स का टाइम लगेगा. ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड टू लास्ट क्वेश्चन. ठीक है, देखो ध्यान से. एन आर्टिलरी गन इज फायर्ड ट्वाइस एट एन इंटरवल ऑफ 24 सेकंड्स. अ मोटर इज मूविंग टुवर्ड्स द गन, heard the sound of the gunfire at an interval of 22 seconds. If the speed of the sound is 330, what is the speed of the car? सिंपल सा है. यहाँ पे गन का है, स्पीड ऑफ गन, है ना. यहाँ पे कार है, यहाँ पे वो पर्सन है या फिर वो कार है या फिर वो मोटरिस्ट है. पहला साउंड किया, इधर सुनना ही आया. दूसरा किया, इधर सुनना ही आया. दोनों के बीच में 24 सेकंड्स का टाइम रहेगा. बट अभी हो क्या रहा है, भले ही वो 24 सेकंड्स का टाइम है, बट ये स्पीड ऑफ द गन
या फिर स्पीड ऑफ द साउंड इधर से आ रहा है एंड स्पीड ऑफ द मोटरिस्ट इधर से आ रहा है, स्पीड ऑफ द मोटरिस्ट इधर से आ रहा है। मेरे को एक चीज बताओ कि ये कितना टाइम डिस्टेंस है, 330 से 330 मीटर्स पर सेकेंड की स्पीड है एंड 24 सेकेंड्स का है, तो डिस्टेंस कितना है 330 इंटू 24, है ना, 330 इंटू 24। ठीक है, अभी इस केस में भी डिस्टेंस हमारा उतना ही है, 330 इंटू 24 का ही डिस्टेंस है। ठीक है, बट अभी यहाँ पे रिलेटिव स्पीड इन अपोजिट डायरेक्शन वर्क करेगी, है ना, रिलेटिव स्पीड इन अपोजिट डायरेक्शन वर्क करेगी, अपोजिट डायरेक्शन में वर्क करेगी तो कैसे वर्क करेगी, स्पीड ऑफ मोटरिस्ट एंड स्पीड ऑफ साउंड, स्पीड ऑफ गन फायर, ये भी काम करेगा। तो इधर डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, डिस्टेंस कितना है मेरा 330 इंटू 24। अभी रिलेटिव स्पीड कैसे वर्क करेगी, स्पीड ऑफ द साउंड प्लस स्पीड ऑफ द मोटरिस्ट, एंड टाइम कितना लगा 22 सेकेंड्स का ही टाइम लगा, है ना। अब ये 22 सेकेंड्स का टाइम लगा, सो दिस इज 22 वन जा, दिस इज 22 15 जा, है ना, 22 10 जा 220, 22 5 जा 110, तो 22 15 जा 330। तो एस एम दैट इज 330 प्लस स्पीड ऑफ मोटरिस्ट इज इक्वल टू 15 इंटू 24, कितना होता है 24 15 से 360 होता है ना। तो स्पीड ऑफ द मोटरिस्ट कितना हो जाएगा, ये 330 माइनस करेंगे तो 30 मीटर्स पर सेकेंड। ठीक है, तो स्पीड ऑफ द मोटरिस्ट इज 30 मीटर्स पर सेकेंड। ठीक है, so here we finish second session of time, speed and distance. In this video we are going to look at linear and circular races. Linear and circular races, this is time speed distance 3, only concept that is left in time speed distance is races. So linear and circular races is what we are going to look at today's video. So linear races simple सा है, let us say two persons are running a race A and B. A finished the race, 100 meter का race है, and then B is at 80 meters, let us say. So A beats B by 20 meters. This is what we will say, है ना. So A finishes the race and B is at 80 meters mark only. So A beats B by 20 meters. This is what we will say. Suppose A finishes the race, A and B, they run a race. A finishes the race in 10 seconds and B finishes the race in 13 seconds. So A beats B by 3 seconds, we'll say. And A beats B by 3 seconds. And this is what a regular conversation would be. ठीक है. Next is, let us say A gives B a head start. Try to understand this concept, head start. So A will start from here and B will start from here. So let us say 20 meters ka head start here. So A gives B a head start of 20 meters. A gives B a head start of 20 meters. अभी 20 मीटर का हेड स्टार्ट मतलब A ने B को बोला जा भाई तू 20 मीटर आगे जा, वहां से भागना शुरू कर. ठीक है ना. दिस इज हाउ a head start can be given in terms of distance, है ना. head start can also be given in terms of time, है ना. So both A and B they start from the same point, but then A gives B a head start of 5 seconds. So A gives B a head start of 5 seconds. So 5 seconds का head start मतलब क्या, A ने B को बोला you run for 5 seconds, after that I'll start. ठीक है ना. So we are doing this activity to help you understand these terminologies. Sorry. Then dead heat, है ना. The race ended in a dead heat. What do we understand by dead heat? That it is impossible to find out the winner. Even using technology, it is impossible to find out who is the winner. This is what we understand from dead heat.
And the race ended in a dead heat means they both reached the finish line simultaneously. एक टाइम पे वो finish line पहुंचे. ठीक है. Then one of the properties of time speed distance, which is when time is constant, distance is directly proportional to speed. That is why d1 upon d2 is equal to s1 upon s2. This property or this concept will be used a lot in linear races. So let us try to solve these questions. First question, x beats y by 200 meters in a kilometer race. ठीक है. So x 1000 meters complete करता है ना, because it is a kilometer race in some time t. He beats y by 200 meters, so y will cover 800 meters in same time t, है ना, because x beats y by 200 meters. Find y speed if x speed is 10 meters per second. X की speed of x is 10 meters per second. So distance is equal to speed into time. Distance is 1000 for x. Speed of x is 10. Time required will be 10 seconds. Time required would be 100 seconds. है ना? Now what would be the time required by y to cover 800 meters? Again 100 seconds. है ना? Because they started simultaneously, and when x finished the race, y was 200 meters behind. है ना? This is what we understand here. So speed of y will be distance covered by y upon time taken by y. So that is 8 meters per second is the speed of y. This is your first question. ठीक है. Next thing is, in a 200-meter race, Ishwar gives Girish a start of 10 meters. So in a 200 meters race, Ishwar will start from here and Girish will start from here, 10 meters आगे से, and beats him by 10 meters. So when Ishwar finishes the race, Girish is 10 meters behind him. है ना? So Ishwar has covered whole 200 meters. Girish has covered only 180 meters. है ना? 10 meters from here and 10 meters from here are eliminated from here. ठीक है ना? So when Ishwar covers 200 meters, in the same time Girish covers 180 meters. है ना? In the same time is important because they both must have started simultaneously from their respective points, and they must both have reached here and here respectively in the same time. ठीक है? So time is constant. So speed of Ishwar upon speed of Girish will be distance covered by Ishwar upon distance covered by Girish. So this ratio is nothing but 200 by 180, which is 929. This is 20 tens. So speed of Ishwar to speed of Girish, this ratio is 10:9. This ratio is 10:9. Okay, moving forward to third question. You are expected to pause the video, solve it yourself, and then move ahead to look at the solution. Third question. In a 100-meter race, A beats B by 10 meters and B beats C by 20 meters. Find the distance by which A beats C in meters, and answer is not 30 meters. Remember this. ठीक है? In a 100 meters race, A beats B by 10 meters. तो A जब 100 मीटर कवर करता है तब B 90 meters कवर करता है. This is how A beats B by 10 meters. And B beats C by 20 meters. So B जब 100 meters कवर करता है T dash time में, C will cover 80 meters in that same time T dash. What is the distance by which A beats C? So when A finishes the race, where is C? That is what we need to find out. है ना? T टाइम में A फिनिश करता है तो T टाइम में C ने कितना डिस्टेंस किया है कवर, ये पता करते हैं. So again time is constant, distance is directly proportional to speed. So speed of B upon speed of C will be distance covered by B upon distance covered by C. Similarly यहाँ पे भी speed of B upon speed of C will be distance covered by B upon distance covered by C. है ना? दोनों लेफ्ट हैंड साइड्स इक्वल है, इक्वेट कर दो.
90 by x is equal to 100 by 80. ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, तो x इधर आएगा. 8 into 9 is 72, है ना? So this is 72 meters. Now when A finishes the race, C is at 72 meters mark, means A is beating C by 28 meters, है ना? So your answer is not 30 meters, it is actually 28 meters. Okay. Moving forward to fourth question. In a 100-meter race, Akbar gives Birbal a start of 2 seconds. Birbal covers 10 meters in that time by the time Akbar starts. If both of them finish together, Akbar's speed is how much? ठीक है. In a 100-meter race, simple सी है. So you have Akbar, you have Birbal. Birbal has 2 seconds का start. And overall it is a 100-meter race. Birbal covers 10 meters by the time Akbar starts. है ना? Birbal covers 10 meters in these 2 seconds by the time Akbar starts, means in these 2 seconds. ठीक है. So how much time will Birbal take? So Birbal is covering 10 meters in 2 seconds. So he'll cover 100 meters in 20 seconds. है ना? Birbal will cover 100 meters in 20 seconds. Now, if both of them finish together, so Birbal has taken 20 seconds का time. Akbar will take only 18 seconds का time. Yes or no? Because Birbal had a head start of 2 seconds. No. Yes or no? So Akbar could cover 100 meters in 18 seconds. What is the speed of Akbar? Distance upon speed. तो ये कितना आ जाएगा? 5, 10 by 18, 5, 5 by 9 meters per second. 5, 5 by 9 meters per second will be the speed of Akbar. Simple है एकदम. ठीक है? Simple है एकदम. ठीक है? Moving forward. So circular race in same direction. Let us say T is the time taken by A and B to meet for the first time anywhere on the track. ठीक है? So this is a circular race. Circular race में यहाँ पे time taken by A and B to meet for the first time anywhere on the track. ठीक है? Let us say A is moving and B is moving. Both are moving in same direction with their respective speeds of SA and SB. ठीक है? With their respective speeds of SA and SB, and speed of A is greater than speed of B. ठीक है? Length of the track is L. Time taken by them to meet for the first time. तो first time meet करना है. It will be length of the track upon relative speed. है ना? Why is this so? Let us try to understand that. Why is this so? Let us try to understand that. Now, B. Now, if A has to meet B, A will have to run 1 lap extra. If A has to meet B, A will have to run 1 lap extra. Yes or no? एक मतलब अगर B ने 4.25 लैप्स रन किए हैं तो A को 5.25 लैप्स रन करना पड़ेगा, है ना? फॉर एग्जांपल अभी थोड़ा सा विजुअलाइज करो. ओलंपिक्स में आपने देखा होगा 10,000 मीटर 20,000 मीटर के रेसेस चलते हैं. उसमें कभी कभी कोई एथलीट दूसरे एथलीट को ओवरलैप कर लेता है ना? ओवरलैप कर लेता है मतलब क्या करता है? He has run 1 round extra. He has run 1 round extra. ठीक है ना? तो ओवरलैप करना है या फिर मीट करना है या फिर ओवरलैप करना है, तो 1 राउंड एक्स्ट्रा भागना पड़ेगा. 1 राउंड एक्स्ट्रा बाय फास्टर 1.
है ना, एक राउंड एक्स्ट्रा भागना पड़ेगा। ठीक है, व्हाट इज द रिलेटिव स्पीड? Relative speed is speed of A minus speed of B, है ना, because they both are moving in same direction. So speed of A minus speed of B. Whenever we consider relative speed in same direction, we consider the extra distance traveled by the faster one, है ना। तो extra distance traveled by the faster one is length of the track, है ना। एक length extra मार के आया है ना वो, length of the track, है ना, एक राउंड एक्स्ट्रा मार के आया है। सो फर्स्ट टाइम मीट करने का ये क्या रहेगा, लेंथ ऑफ द ट्रैक अपॉन रिलेटिव स्पीड विच इज एस ए माइनस एस बी, है ना। तो फर्स्ट टाइम अगर आपको मीट करना है, यू विल हैव टू कवर वन लेंथ ऑफ द ट्रैक एक्स्ट्रा। ठीक है, अगर सेकेंड टाइम मीट करना है तो यू विल हैव टू कवर टू लेंथ ऑफ द ट्रैक्स एक्स्ट्रा, है ना, क्योंकि दो सेकेंड टाइम मीट करना है तो एक बार मीट करके गए, फिर से एक और बार मीट करके गए, तो टू लेंथ्स ऑफ द ट्रैक एक्स्ट्रा। सो टाइम रिक्वायर्ड विल बी ट्वाइस द लेंथ ऑफ द ट्रैक अपॉन रिलेटिव स्पीड, है ना। रिलेटिव स्पीड तो ऐसी ही रहेगी। थर्ड टाइम अगर मीट करना है हमें तो टाइम रिक्वायर्ड विल बी थ्राइस द लेंथ ऑफ द ट्रैक अपॉन रिलेटिव स्पीड एंड सो। ठीक है, ये तो बेसिक सा कंसेप्ट है। नाउ if the ratio of speed is SA is to SB, if the ratio of speed is SA is to SB, है ना, which is X is to Y, then number of distinct meeting points on the track will be mod of X minus 1, and it will be mod of X minus 1। ठीक है, तो अगर मैं बोलूं X is to Y is 3 is to 4, तो number of distinct meeting points will be 1, है ना। If I say X is to Y is 5 is to 7, number of distinct meeting points will be 2। ठीक है, if X is to Y is 9 is to 13, number of distinct meeting points will be 4। ठीक है, तो अभी ये डिस्टिंक्ट मीटिंग पॉइंट्स की भी कुछ एक खासियत रहेगी, है ना। पहली, if there is only one distinct meeting point, if there is only one distinct meeting point, then it has to be starting point, है ना। जैसे इस केस में देयर वाज ओनली वन डिस्टिंक्ट मीटिंग पॉइंट, तो वो स्टार्टिंग पॉइंट ही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट, इफ नहीं, सीधा सीधा सिंपल सा करें, डिस्टेंस बिटवीन एनी टू distinct meeting points is constant। ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल, इफ देयर इज ओनली वन डिस्टिंक्ट मीटिंग पॉइंट, इट हैज टू बी स्टार्टिंग पॉइंट। बट इफ देयर आर टू डिस्टिंक्ट मीटिंग पॉइंट्स, तो ये ऐसे रहेगी, है ना, एक 0 डिग्री पे, एक 180 डिग्री पे। इफ देयर आर 4 डिस्टिंक्ट मीटिंग पॉइंट्स, तो एक 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, ऐसे हमारे सेपरेट डिस्टिंक्ट मीटिंग पॉइंट्स रहेगी। ठीक है, डिफरेंट डिस्टिंक्ट मीटिंग पॉइंट्स रहेगी। ठीक है, एंड डिस्टेंस बिटवीन एनी टू डिस्टिंक्ट मीटिंग पॉइंट्स will be constant। ठीक है, what will be the number of distinct meeting points if the ratio of speed is 15 is to 21, and if you say 6, that will be wrong, है ना। this ratio should be in reduced format, है ना। ratio should be in reduced form। okay, write this down। moving forward to circular races in opposite direction, same वही चीज। this is the length of the track,
A and B are moving in opposite direction with their respective speeds of SA and SB. ठीक है, we are again looking at T, है ना, ये चीज फिर से लिख दो. T is time taken by A and B to meet for the first time anywhere on the track. है ना? T is time taken by A and B to meet for the first time anywhere on the track. ठीक है. So T is the time taken by A and B to meet for the first time anywhere on the track. Now they are moving in opposite direction. So time required would be length of the track upon relative speed. है ना? Now try to understand this. Let us say I open this track. है ना? ये ट्रैक को इधर से और इधर से ऐसा करके ओपन कर दिया. तो ये ट्रैक कुछ ऐसा दिखेगा. यहाँ से मेरा B भाग रहा है और यहाँ से मेरा A भाग रहा है ना? Now when I open it, इनके बीच में लेंथ कितना है? L, है ना? लेंथ ऑफ द ट्रैक. What is the relative speed? SA plus SB as they are moving in opposite direction. ठीक है, as they are moving in opposite direction, their relative speed is SA plus SB. Now, whenever we consider relative speed in opposite direction, we consider the initial distance between the two objects. है ना? So initial distance between the two objects is nothing but length of the track. है ना? Initial distance between the two objects is nothing but length of the track. तो first time meet करना है उन्हें. So time required would be length of the track upon relative speed, which is SA plus SB. अगर second time meet करना है उन्हें, तो time required would be length of the track upon twice the length of the track upon relative speed SA plus SB. Third time meet करना है, the time required would be thrice the length of the track upon SA plus SB and so on. ठीक है. Now let us say the ratio of their speed SA is to SB is X is to Y. Then number of distinct meeting points will be X plus Y. ठीक है. For example, 3 is to 4, X is to Y is 3 is to 4, so number of distinct meeting points will be 7. If X is to Y is 1 is to 2, number of distinct meeting points will be 3. And if X is to Y is 11 is to 15, so number of distinct meeting points will be 24 and so on. ठीक है. Now जो distinct points की property है वो same रहेगी यहाँ पे, है ना? मतलब ये जो तीन properties हमने distinct point की लिखी है वो यहाँ पे भी same रहेगी. Like if there is only one distinct meeting point, then it has to be starting point. Distance between any two distinct meeting point is constant and ratio should be in reduced format, है ना? मतलब अगर आप बोलोगे 12:18 के 30 डिस्टिंक्ट मीटिंग पॉइंट्स नहीं रहेंगे, इसको रिड्यूस फॉर्मेट में दो 2:3, तो 5 डिस्टिंक्ट मीटिंग पॉइंट्स रहेंगे. ठीक है. दिस इज सर्कुलर रेसेस इन अपोजिट डायरेक्शन. नाउ व्हाट इफ दे वांट टू मीट एट द स्टार्टिंग पॉइंट? सो T is time taken by A and B to meet for the first time at the starting point. Time taken by A and B to meet for the first time at the starting. ठीक है. Let us say length of the track is 200 meters. A is moving with the speed of 4 meters per second. B is moving with the speed of 5 meters per second. है ना? They have to meet at the starting point. So the number of rounds taken by A will be an integer. Number of rounds taken by B will also be an integer. तो A के लिए क्या रहेगा? Time taken to complete one round will be 200 by 4, 50 seconds. है ना? 2 राउंड कंप्लीट करने के लिए 100 सेकेंड्स, मतलब 50 सेकेंड्स पे वो स्टार्टिंग पॉइंट पे रहेगा, 100 सेकेंड्स पे वो फिर से स्टार्टिंग पॉइंट पे रहेगा, है ना? 150 सेकेंड्स पे वो फिर से स्टार्टिंग पॉइंट पे रहेगा, 200 सेकेंड्स पे वो फिर से स्टार्टिंग पॉइंट पे रहेगा, 250 सेकेंड्स पे
again he'll be on starting point. Then B, time taken by B to complete one round will be 40 seconds, है ना? 40 seconds में कैसे 200 by 5 कर रहा हूँ ना मैं, distance by speed. तो 40 seconds में he will be at the starting point. फिर 80 seconds पे again he'll be at the starting point. 120 seconds पे again he'll be at the starting point. 160 seconds पे again starting point. 200 seconds again starting point. 240 seconds again starting point, and so on. If you observe, at 200 seconds, they both are at the starting point, and this is their meeting point at starting point. है ना? This is their meeting point at starting point. Okay, 1 second. So now what is this 200? This 200 is nothing but LCM of 40 and 50. है ना? And what is this 40? Time taken by A to complete one round. What is this 50? Time taken by B to complete one round. ठीक है? So ये 40 and 50 का LCM है. So time taken by A and B to meet for the first time is nothing but अरे यार so time taken by A and B to meet for the first time at the starting point, it is nothing but LCM of time taken by A and B to complete one round. Okay, so which is nothing but LCM of length of the track upon speed of A, comma, length of the track upon speed of B, and so on. अगर 3 लोग रहेंगे तो length of the track upon speed of C. ठीक है? This case is not dependent on the direction, है ना? They can run in the same direction or they can run in the opposite direction. तुम्हारा ये केस तो वैसे ही आएगा ना, तो you have to meet at the starting point, है ना? तुम आप ऐसे भाग के आओ या ऐसे भाग के आओ, both the cases you will be running in the same direction. ठीक है? Let us try to solve the questions. Sixth question. Fifth question. Ram, Sham and Taru started cycling from a point on a circular track 600 meter long with the speed of 10, 15 and 20 respectively. Find the time taken by them to meet at the starting point for the first time. So this is 600 and then 10, 15 and 20 are their speeds. So time taken would be LCM of 600 by 10, 600 by 15 and 600 by 20. So which is nothing but LCM of 60, 40, 30. LCM of 60, 40 and 30 is 120 seconds. है ना? 60, 40 and 30 का LCM is expected from. Moving forward to sixth question. Amar and Bhavan started simultaneously from a point on a circular track of length 600 meters with the speed of 15 and 5 respectively and cycled around it. So 15 and 5 की speed है. Find the time taken to meet for the first time if they cycled in the same direction. अगर same direction में है तो it is length of the track upon relative speed. So 15 minus 5, that is 10 to 60 seconds लगेगी. What if they are moving in opposite direction? Then time required would be length of the track upon relative speed, which is 15 plus 5. 15 plus 5 is 20. So ये 0, 30 seconds ऐसे आंसर आ जाए. ठीक है ना? 60 seconds, 30 seconds, यहाँ पे 120 seconds. Moving forward. Seventh question.
So seventh question. Peter and Paul are running in opposite direction along a circular track of length 600 meters with initial speed of 3 and 6. They start at the same point at the same time. Whenever they meet, they exchange their speed and carry on in their respective direction. Find the shortest distance between Peter and Paul when measured along the track when Peter completes 4/1/4 round. Simple. So Peter and Paul total 600 meters का track with initial speed of 3 and 6, and they are running in opposite direction. They start at the same point at the same time whenever they meet. Let us say they meet here. So Peter is coming from here with the speed of 6. ठीक है? And Paul is coming from here with the speed of 3. ठीक है? With the speed of 3. Whenever they meet, they exchange their speed and carry on in their respective direction. Now, here they have met. Now they'll exchange their speed. So he'll travel with the speed of 3 and this person will travel with the speed of 6. ठीक है? So they will again meet where? They will meet again here. है ना? Because ये 3 के स्पीड से गया था, ये 3 के स्पीड से वापस आया. ये 6 के स्पीड से गया था, ये 6 के स्पीड से वापस आया. ठीक है ना? So they again will meet at the starting. ठीक है? They will again meet at the starting point. ठीक है? Once they meet at the starting point, again they will meet at this point, exchange their speeds, and again meet at the starting point. Okay. Some issue with the PPT we have. We'll start with the seventh question again. Peter and Paul are running in opposite direction along a circular track of length 600 meters. So there is this circular track of 600 meters with initial speed of 3 meters per second and 6 meters per second. So we have Peter, we have Paul. Peter is running at 3 and Paul is running at 6, and they start at the same point at the same time, and they are running in opposite direction. Same point, same time. Whenever they meet, let us say they'll meet somewhere here. Okay. They'll meet somewhere here. They'll meet somewhere here. So Paul is coming with a speed of 6 over here, and then Peter is coming with the speed of 3 over here. Once they meet, whenever they meet, they exchange their speed and carry on in their respective direction. So they exchange their speed and carry on in their respective direction. So what has happened? Whatever Paul had covered at a speed of 6, now Peter will be covering with the speed of 6. And whatever Peter had covered with the speed of 3, now Paul will be covering with the speed of 3. So their second meeting point will be at the starting point. Once again they meet at the starting point, Paul will move at a speed of 6, Peter will move at a speed of 3. They'll meet again here. So this will continue. After every one round, they are going to meet at the starting point. Try to visualize it. They are going to meet at the starting point after every round. So what is the shortest distance between Peter and Paul when measured along the track when Peter completes 4/1/4 round? Okay. So when Peter covers 4/1/4 round. So after 4 rounds, they both are at the starting point. As we observe, एक राउंड होने के बाद भी वो स्टार्टिंग पॉइंट पे आते, 2 राउंड होने के बाद भी वो स्टार्टिंग पॉइंट पे आते, 3 के बाद भी एंड 4 के बाद भी they will be at the starting point. Now Peter has crossed 4/1/4 round. So this is where Peter is now. So if Peter has crossed 1/4 round, Paul will cross half of the round.
Paul will cross half of the round. Why? Because Peter and Paul, Paul is running at twice the speed. No? Now, what is the distance between them? So, distance between them is 1/4 track. 1/4 track is 1/4 of 600. That is 150 meters. 150 meters will be the distance between them. ठीक है? Moving forward to 8th question. 8th question. Two runners run in the same direction along a circular track of 3 kilometers. 3000 meters का पकड़ लेते हैं. The faster runner overtakes the slower every 1 hour. ठीक है. Find the speed of the slower runner if the faster one completes the length of the track 2 minutes sooner than the other. है ना? तो time taken by faster one is time taken by slower one minus 2. है ना? Time taken by slower one minus 2. ठीक है. And we have this case. The faster one overtakes the slower one every 1 hour. है ना? तो 2 minutes है ये. वो ध्यान में देखेगी, बाद में उसको आर में कन्वर्ट करना है, कैसे करना है वो देखेगी. सो टाइम रिक्वायर्ड टू मीट एट फॉर द फर्स्ट टाइम इज लेंथ ऑफ द ट्रैक अपॉन रिलेटिव स्पीड. लेंथ ऑफ द ट्रैक अपॉन रिलेटिव speed. Now length of the track is 3000 meters. Relative speed is speed of the faster one minus speed of the slower one, and this is equal to 1 hour. So speed of the faster minus speed of the slower is equal to, okay, they meet after Acha, we have converted it into meters, no? So let us not convert it into meters. So speed of the faster minus speed of the slower is 3 kilometers per hour. ठीक है. Now time taken by faster one is time taken by faster one is equal to time taken by slower one minus 2 hours. Okay. So distance is constant. Distance is constant, so speed of the faster one is equal to time taken by faster one. Reverse में distance constant है ना दोनों का. And speed of the slower one is nothing but TS. ठीक है ना? तो speed of the faster one is equal to TS. This is speed of the slower. This is TS minus 2. इससे कुछ फायदा होगा क्या? नहीं होगा शायद. ठीक है. So there can be some different method. Let us try to understand that method. So the faster one completes one length of the track 2 minutes sooner than the other. Okay, one length of the track. So this is 3000. Let us eliminate this. 3000 upon speed of the faster one is equal to 3000 upon speed of the slower one. 3000 upon speed of the slower one. So this equation will be time taken to complete one round will be 3000 upon speed of the faster one is equal to 3000 upon speed of the slower one minus 2 minutes को हम hours में convert कर देते हैं. ठीक है. तो 2 minus 2 by 60 that is 1 by 30 इधर आ जाएगा. 3000 कॉमन आ जाएगा. 1 by SS minus 1 by SF ऐसा आ जाएगा. So this is 3000. बेस में क्या आ जाएगा? SF minus SS upon SS into SF ऐसा आ जाएगा. This is 1 by 30. ठीक है. Now SF minus SS is 3. No? SF minus SS is 3. So 1 by 30 into is equal to 3000 into 3 by SS into SF. ठीक है. So SS into SF ये ऊपर आ जाएगा. तो it will be 3000 into 3 into 30.
दैट इज 27 एंड उसके सामने 4 zeros। ठीक है, अभी एस एफ की वैल्यू क्या आ जाएगी, एस एस प्लस 3 हो जाएगा ये। सो एस एस प्लस एस एस प्लस 3 ऐसा आ जाएगा ये, है ना। अच्छा, मैं 3000 क्यों ले रहा हूँ यार, मैं मीटर्स में क्यों ले रहा हूँ, इट विल बी 3 ओनली, this will be 3, this will be 3, so this will be 3, this will be 3, so 270 रहेगा ये, 270। so now ss into ss plus 3 will be 270, which is the best solution for this, 15 into 18, है ना, 15 into 18, है ना। तो what are they asking, find the speed of the slower runner, speed of the slower runner will be 15 kilometers, है ना, 15 into 18 is 270 only, no, है ना। You will make a quadratic and then solve the quadratic, this is the solution of the quadratic, no? Okay, moving forward to ninth question. What does ninth question say? Prakash and Pramod are running along a circular track, having started at the same time from the same point in the same direction. Okay, same point. Prakash and Pramod, same time, same point, same direction. In how much more distance would Prakash have traveled compared to Pramod by the time they meet for the 11th time? 11th time के लिए meet करना है. If it is given that radius of the track is 7 meters and Prakash and Pramod are running at 22 and 11. 22 and 11. So 11th time meet करने के लिए time जो रहेगा 11 times the length of the track upon relative speed, है ना। तो this is the extra distance traveled by the Prakash. This is the extra distance traveled by the Prakash. Extra distance traveled by the faster one. So 11L, 11 times the length of the track is the extra distance traveled by the Prakash. Now, what is the distance? 11 into 2 pi r, right? So 2 into 22 by 7 into 7. Length of radius is 7. So this 7, this 7 will get cancelled. 22 into 22 is 484 meters. 484 meters. Moving forward to 10th question. Moving forward to 10th question. Okay. P and Q started moving simultaneously from points X and Y respectively on a circular track in the same direction. XY is 2 kilometers and length of the track is 6 kilometers. Okay. So X, Y. Initial position of P was behind Q. So P started moving from X. Q started moving from Y. Distance between X, Y is 2 kilometers. ठीक है. Okay. The initial position of P was behind this and overall this is 6 kilometers का track. Overall track is 6 kilometers. है ना? P caught up with Q for the second time in 40 seconds, 40 minutes. अभी extra distance कितना travel करना पड़ेगा ये देखो, है ना? Second time meet करना है ना? If they start from the same point तो 2 round extra मारने पड़ेगी. But first time meet करना है तो X को तो 2 किलोमीटर ही, let us say they meet here. So P covers this much distance and X covers this much distance. So P has to cover 2 kilometers extra. And then यहाँ से second time meet करना है तो 6 kilometers और extra भागना पड़ेगा. So second time meet करने के लिए P will have to run 8 kilometers extra. P will have to run 8 kilometers extra. है ना?
time required would be extra distance run by P upon relative speed, which is speed of P minus speed of Q. ठीक है, and it is 40 minutes, no? It is 40 minutes. तो 40 by 60 करना पड़ेगा ये, ठीक है. And had P started in opposite direction, अगर P opposite direction में start करता, they would have met for the first time in 12 minutes. They would have met for the first time in 12 minutes. तो first time meet करने के लिए इनिशियल डिस्टेंस उनके बीच में कितना है? अभी इनिशियल डिस्टेंस उनके बीच में सिर्फ 4 किलोमीटर का बाकी है ना? तो 4 किलोमीटर. Here relative speed will be SP plus SQ and they will have met for in 12 minutes. तो divided by 60 भी करना पड़ेगा, ठीक है. So this is how much 2 by 3 is equal to 8 upon SP minus SQ. तो SP minus SQ is equal to 12 and this is 1 by 5. So SP plus SQ is equal to 4 into 5, 20. SP minus SQ is 12. Simply adding it, we get 2 SP is equal to 32. So SP will be equal to 16. And the speed of V will be equal to 16 kilometers per hour, which is option A. Okay, so this is how we finish time, speed and distance. Okay, thank you so much. Jai Hind.